ओके, वो कर्टेन बंद कर दो पूरा, 100% टच कर दो उसको, 100% टच कर दो उसको। एक खरांशु, आप पीछे चले जाओ लास्ट बेंच पे, ऊपर पंखा ध्यान रखना बस। स्टार्ट। सो देयर आर सर्टेन हम क्राइटेरिया, थोड़ा इस तरफ आ जाओ बेटा, आप लोग थोड़ा अंदर बैठो बेटा। ध्रुव थोड़ा साइड बेस बेटा, हाँ नहीं, सेकंड बेंच पे बेस और करेंगे, चलेगा? हाँ बेटा, हाँ छोड़ो अभी। उसको राइट में कर दे बेटा। ओके चलो। यस, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस वी आर टॉकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स। एक चैप्टर है आपका क्लास 11th में, some basic concepts of organic chemistry, some basic principles of organic chemistry. The same chapter here we are studying as a general organic chemistry because थोड़ा डेप्थ में हम लेंगे इसको, करेक्ट? तो थोड़ा डेप्थ में हमें पढ़ना है, इसके लिए हमने उसको GOC1 GOC2, तो GOC1 का एक चेकलिस्ट आपके पास है अभी राइट नाउ, ओके? उसमें जो जो चीजें हैं उनको हम सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज व्हाट इज हाउ इट इज इन्वेंटेड, मींस कहाँ से बात आई। तो देयर वाज ए साइंटिस्ट जिनका नाम है बर्जीलियस। एक साइंटिस्ट थे जो बर्जीलियस थे, सबसे पहले वहां से उन्होंने शुरुआत की कि इट इज अ बिग नेम बर्जीलियस, यू कैन सर्च समवेयर। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी शुरुआत में, उससे पहले कहीं मिली नहीं थी। तो ही डिफाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उनके जो एफर्ट्स थे उनके थ्रू उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश किया जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थियरी, ओके, जिसका नाम था वाइटल फोर्स थियरी। तो व्हाट ही सेड, व्हाट ही टोल्ड दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। उन्होंने ऐसा एक थ्योरी दिया, ओके? So from here we will write कि उनका जो vital force theory था, you start writing accordingly, आप थोड़ा थोड़ा लिखता ही रहना। vital force theory, vital force theory, okay? So as per theory, what is this theory? कि organic compounds, excuse me sir, organic compounds, yes sir, could you write a little bit big? yes, organic compounds are those compounds obtained from living organisms, obtained from living organisms। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उन्होंने ये बताया, करेक्ट? तो ये उनकी थियोरी थी उस वक्त बहुत फेमस थी, बिकॉज इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स मैंने जैसे बताया कि वो कहाँ से मिलता है कि इट कैन ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन जनरेट। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, व्हाट ही डिड इन एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम था होलर। साइंटिस्ट का नाम क्या था? होलर। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे तो उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, ओके?
जैसे कि उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया NH4CnO, इसको बोलते हैं एमोनियम साइनेट, एमोनियम साइनेट। ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और उन्होंने जब इसका हीटिंग किया तो ही गॉट वन कंपाउंड एंड विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो उस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर थी वो ये थी NH2CO NH2, जिसको आप क्या बोलते हो, यूरिया। ओके, तो यूरिया ही गॉट, तो वहां से पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया कि द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो जनरेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पर द वाइटल फोर्स थियरी। जब बनी थी तब तो ऐसा बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, या तो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है ओनली रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बट इनके थ्रू ऐसा पता चला कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम होगी, इनकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो गई। हाउ टू डिफाइन अगेन, अब डेफिनेशन क्या दे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी से ये बनता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी तो ये बनता है। डेफिनेशन का प्रॉब्लम था, करेक्ट। देन डेफिनेशन ऐसा बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है कि जिसमें कार्बन है, जैसे कि इसमें भी कार्बन है, तो ये कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और उसमें भी क्या होता है, कार्बन। तो यू कैन नॉट डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि वो ऑर्गेनिक से भी मिलता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी मिलता है, ऐसा डेफिनेशन कोई लॉजिक वाला नहीं था। देन हम सिंपल ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन, ऐसा सिंपल सा बोल दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन वाले कंपाउंड तो इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है, करेक्ट। तो दिस इज इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दिस इज ऑर्गेनिक मटेरियल, तो वहां पे ये प्रॉब्लम था। तो फिर ऐसा एक नया डेफिनेशन बनाया गया जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, जो उसका लेटेस्ट डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एंड दैट डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, ओके, कि जो जनरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। Hydrocarbons and derivatives are called as organic compounds. So जो लेटेस्ट डेफिनेशन ये है कि hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. उनकी डेरिवेटिव को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन अगेन, तो पहले तो वाइटल फोर्स थियरी पूरी वॉइड हो गई, वो कैंसिल आउट हो गई जब इन्होंने क्या कर दिया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक, और उसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये काम किया कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इट वाज द स्टोरी, ओके। और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक डेफिनेशन बना, इसमें बताया गया कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर organic compounds. So what are hydrocarbons now? Hydrocarbons are those compounds which contains only hydrogen and carbon. Hydrocarbons are those compounds which contains only hydrogen and carbon. So hydrocarbons are those compounds which contains only carbon and hydrogen, कि वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को कैरी करते हैं, ऐसे बताया गया, करेक्ट। एंड फिर उसके डेरिवेटिव से क्या मतलब है कि उसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया, हेलोजन लगाया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया, तो उनको उनके क्या बोलेंगे हम, डेरिवेटिव्स, करेक्ट। तो ये उनकी बेसिक इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो है। किसी को डाउट है बेटा इसमें? इट इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इंट्रोडक्शन। लेटेस्ट डेफिनेशन में आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। They can be obtained from the non-living organisms. Okay. Even you cannot say simply that organic compounds are those compounds which contain carbon, because carbon में तो carbon वाले compound तो inorganic भी है, carbonates, bicarbonates. So your latest definition will include hydrocarbons and their derivatives are called as organic compounds. Okay, clear? Okay. Then we will be understanding several organic compounds. Okay.
और उससे पहले हमें कुछ रूट वर्ड्स पढ़ लेने हैं। हम कुछ नए वर्ड्स लेके जाएंगे तो हमें रूट वर्ड्स पढ़ने हैं। रूट वर्ड आपको सबको पता है वैसे, फिर भी एक बार रिवाइज करके हम यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई रूट वर्ड्स क्या होते हैं। कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब नेमिंग किया गया तो कुछ रूट वर्ड्स डिफाइन किए गए, एंड रूट वर्ड्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 होती है तो उसके लिए हमें उसके नाम गिवन है। जैसे कि इसका नाम है मिथ, है ना, इसका मिथ है, देन ईथ, देन प्रॉप, ब्यूट, देन पेंट, हेग्स, यस हैप, देन ऑप, नॉन एंड डेक। तो इस प्रोसीजर से उनको नाम दिए गए। वैसे तो हमारे पास और भी रूट वर्ड्स है बहुत सारे, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ इतनी है। तो वी विल ऐड दिस नंबर्स अकॉर्डिंगली। तो मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग, हेप, ऑप, नॉन एंड डेक। जब हमारे पास कार्बन की संख्या इसमें से कोई भी रूट नंबर के हिसाब से होगी तो उसका एक बेसिक नाम बनेगा। क्या नाम बनेगा? हेग्स। और उसके आगे पीछे क्या लगेगा वो हम समझेंगे। उसके आगे पीछे क्या लगने वाला है दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी सून। ओके, बट आपको सबसे पहले ये रूट वर्ड्स याद कर लेना है। ओके, तो रूट वर्ड्स को एक बार साथ में बोलेंगे बेटा सभी लोग, है ना। मेथ से लेके हम डेक तक बोलेंगे। बोलिए चलो। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग, ऑफ, नॉन, डेक। ओके, याद रह गया? या आप लिख लीजिए बेटा रूट वर्ड सारे, इसके नीचे रूट वर्ड ऐड कर लीजिए। इसके नीचे आप रूट वर्ड्स ऐड कर लीजिए। Online students, do you understand everything clearly? Yes, sir. This session is being recorded. Okay, after this session we will share the link. तो कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस रह गया हो तो आप उसको देख के कंप्लीट कर सकते हो। But this is very important thing. We are understanding everything in detail. Okay, and this is something very important. Why? Because अगर हम कोई सा भी पेपर कंसिडर करें, है ना, ऑर्गेनिक में जाओगे तो 40% वो कैरी करेगा। तो जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, पास्ट ऑब्जर्वेशन, the students feel difficulty in understanding the basics. ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स नहीं पता रहता है उनको, तब जाके उनको कोई समझ में नहीं आता है कि वर्ड क्या, प्रॉब्लम्स क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है। एंड इट इज ओशन। वैसे तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी जो कंस्ट्रेंट है उसके हिसाब से हम उतना ही पोर्शन उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट। ओके, उनका कोई मिस थियरी तो उन्होंने अलग अलग पब्लिकेशंस किए थे, है ना। तो जो पब्लिकेशंस है उनके रिपोर्टेड है, लेकिन हमें बस इनको नाम भी तो याद नहीं रखने। हमें हमें सिर्फ इतना समझना है कि थियरी जब बनी थी तब हाइड्रोकार्बन्स को मेन सब्जेक्ट में रखा गया था, ना ही कार्बन को, ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना। तो थियरी तो होगी हर एक की, हर एक साइंटिस्ट ने। इसके बाद तो कोल्ब नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एसिटिक एसिड बना लिया था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन व्हाट इज वी नीड, मैंने क्या बोला कि इट इज अ होल साइंस। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट ओनली दैट थिंग कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ हाइड्रोकार्बन्स आर व्हाट। अब हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हम इसको मिटा देते हैं, राइट डाउन। हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। All of you write along with me. Okay, hydrocarbons are classified in two categories. Hydrocarbons are classified in two categories. Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Now, what are saturated hydrocarbons? Like where we cannot see any double bond.
जब भी आपको कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड्स दिखे, लाइक दिस CH3 तो आप उसको बोलोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, जब आपको कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो उसमें क्या होने वाला है, हाइड्रोजन है, कार्बन, तो जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होता है उसकी बात चल रही है। So when there is a no double bond you can see between carbon carbon anywhere in the compound, anywhere in the compound माने के कोई सा भी एक पार्ट कंपाउंड का ले लिया, भले ही कितनी लंबी चेन हो, कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड ना मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, वेयर वी सी आइदर डबल बॉन्ड, या तो हमें डबल बॉन्ड मिल जाए कहीं पे भी, या तो फिर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, या तो फिर दोनों ही मिल जाए उस कंपाउंड में। ओके, आइदर आर वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड इज फर्स्ट, उसके ब्रिच है, या तो दोनों ही आपको मिल जाए, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड या तो दोनों ही मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक दिस कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, okay, I will add 4 hydrogens, okay, 2 here and 2 here। अब मैं एक चीज आपको समझा दूं आगे जाने से पहले कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड बनाने की, वो हम इसके हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। बट अभी थोड़ा समझने के लिए, कार्बन कैन बी कार्बन कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स, और कार्बन कैन फॉर्म 3 single bonds and 1 pi bond, or carbon can form 2 single bonds and 2 pi bonds। It means that carbon can form total 4 bonds, वो टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, नाउ इन 4 बॉन्ड्स में वो कार्बन से भी ज्वाइन हो सकता है और वो हाइड्रोजन से भी ज्वाइन हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन, तो ये कार्बन कार्बन से भी ज्वाइन हो सकता है और हाइड्रोजन से भी ज्वाइन हो सकता है। नाउ इन दिस केस कार्बन इज कनेक्टेड विद कार्बन बट विद डबल बॉन्ड। नाउ लुक एट दिस कार्बन, इस कार्बन को ध्यान से देखा जाए तो इसके पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, सो व्हाट वी डू, वी हैव टू ऐड 2 बॉन्ड्स मोर। ओके, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, उनके रिस्पेक्टिवली हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। So this is what a double bond structure, and that is why it is called as unsaturated compound। Similarly, अगर आपको कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए कार्बन कार्बन के बीच में, then carbon requires only one bond to form। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को डबल बॉन्ड, और ये कहीं पे भी मिल जाए आपको पूरे स्ट्रक्चर में, भले सारे ही सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन एक जगह या तो कोई 2 जगह पे आपको ऐसी चीजें मिल जाए, व्हेन यू फाइंड सच काइंड ऑफ थिंग, you will call that compound as an unsaturated hydrocarbon। Okay, you will call unsaturated hydrocarbon, understood? Okay, so this is calculated by the one word which is we call degree of unsaturation। इसको degree of unsaturation से calculate किया जाएगा। You understand these things? Okay, unsaturated hydrocarbons and saturated hydrocarbons, so divide like this, make this flow chart, make this flow chart। Everyone keep this ये पीछे नहीं है तो एक बार दे दो बेटा, सबके बेंच पे एक शीट होनी चाहिए, दैट इज अ चेकलिस्ट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, यहाँ तक की बात समझ में आई? मेक दिस रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स आल्सो, मेक दिस रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स आल्सो। So you can write in whole compound, in whole compound there must be carbon carbon single bond, carbon carbon single bond। Yes, अब आएगा बेटा condensed structure formula, and here you will take that
in whole compound, there must be at least one place. There must be at least one place where presence of carbon double bond carbon or carbon triple bond carbon. In whole compound, there must be at least one place where presence of carbon double bond carbon or carbon triple bond carbon. एटलीस्ट एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए. Is that understood? Okay. So कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स. ओके, जिसमें वो कार्बन बॉन्ड किससे बनाएगा? या तो हाइड्रोजनों से बनाएगा या तो कार्बन इटसेल्फ से बनाएगा. ओके, so after this portion we will understand different ways of representation of organic compound on paper. We will understand different ways of representation of organic compounds on paper. पेपर पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. And that is the one thing, first thing by which you can identify the molecule what it is. That is the first thing by which you can identify what molecule is what. Okay, so online students, do you understand everything till now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so write down now. Representation of organic molecules on paper. Representation of organic molecules on paper. So more you focused today, okay, it is easy to identify molecules. Representation of organic molecules on paper. Representation of organic molecules on paper. Okay. Now when you are representing, you are writing. Okay. So the first formula that we call molecular formula. First formula that we call molecular formula. Now what is molecular formula? We'll write definition. Okay, इसका एक definition लिखते हैं. It represents total number of carbon and hydrogen. आप ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा जनरलाइज करना है स्टेटमेंट को तो ऐसा कर सकते हैं. It represents total number of atoms. Total number of atoms present in a molecule. It represents total number of atoms present in a molecule. For example, molecule is a single entity. Compound is a multiple of that single entity. Okay. So let us take example like if you want to represent methane. So methane has 1 carbon and 4 hydrogen. So you can write 1 carbon and 4 hydrogen combinedly CH4. That we call molecular formula. For example, if you want to write octane. So when I speak word oct, you must understand कि उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 8 कार्बन तो होने ही चाहिए. So it must be like C8 और उसमें हाइड्रोजन उससे डबल +2 होते हैं. तो 8 2 जा 16 +2. तो ये ऑक्टेन का फॉर्मूला है. ओके, so C8H18, and these formulas are specifically we speak like molecular formula. In formulas को हम क्या बोलते हैं? Molecular formula. Is that clear? Okay. This is because a carbon and hydrogen involved है. Otherwise ये सभी जगह पे applicable है.
whether it is an inorganic material or a organic material. We can write the molecular formula. Okay, second formula we will write, that is condensed structural formula. Okay, that is condensed structural formula. So give title condensed structural formula. Condensed structural formula, जिसको हम CSF पढ़ते हैं. Condensed structural formula, CSF. Okay, what is condensed structural formula? For example, I want to write octane. So how many carbons are there? 8 carbons. So we can write 8 carbons like this: CH3, then CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So this is condensed structural formula of same compound octane. Okay, where carbon and hydrogens group together, but they are not grouped together in a way that they are showing total number. They are showing number of carbons separately attached to each other. Okay, इसको थोड़ा और कंडेंस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जो सिमिलर है. Okay, so how many they are similar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you can write like also CH3, then CH2 whole 6, then CH3. So this is also called as condensed version of this octane molecule. Okay, like another example, let us take benzene. तो बेंजीन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6. Okay, so if I want to write the benzene's condensed structural formula, then it would be like CH2, sorry, CH, 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 like this, and there is a presence of double bonds. Okay, so this is a condensed formula, condensed structural formula of benzene. So this is how condensed formulas are made. Means we are making them group together, but we are also showing how carbon other carbon से connected है और what is the location of that carbon with respect to the other carbon. ऐसा हम show करते हैं. So that is we call condensed structural formula. Do you understand everybody? कोई भी डाउट आ जाएगा आप रेज हैंड कर लेना and discuss with proper. No, just simply. Clear है? Third one, expanded structural formula. Expanded structural formula. में structural formula के दो टाइप होते हैं, condensed structural and expanded structural. Okay, so we'll write expanded structural formula. और इसको हम ESF लिखेंगे, expanded structural formula. Correct? Now what is this? Understand, when you are showing each and every bond, when you are showing each and every bond which is connected in a molecule, that is called as expanded structural formula. For example, let us take benzene only. So if I want to expand the structure of benzene, I will show the bond between carbon and carbon. Okay, like this I will show the bond present between carbon and carbon, as well as I will show the hydrogen is also bonded with carbon. So I am showing each and every bond in expanded way, that is called as benzene, and also put the double bond. So not an individual bond is hidden. सारे के सारे बॉन्ड दिख गए, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपांडेड फॉर्म. ओके, फॉर एग्जांपल हम एक इथेन मॉलिक्यूल लेते हैं, एक नया मॉलिक्यूल लेते हैं इथेन.
So ethane has a molecular formula. If I write the ethane's molecular formula, yes, what is it? C2H6. क्या है? C2H6. 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए. तो इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला ये, तो उसमें 2 कार्बन कनेक्टेड है. नाउ ईच कार्बन रिक्वायर हाउ मेनी हाइड्रोजन? इन दिस केस 3. इन दिस केस एक ही बॉन्ड बना हुआ था, तो उसको कितने बॉन्ड चाहिए? और 3. So you have to place the 3 hydrogens like this in expanded form. In expanded form. So this is how ethane molecule forms. Understand? So first molecular formula, then condensed structural, then expanded structural formula. Understand everyone? Okay? इसमें कोई doubt नहीं है ना? Okay. Now the fourth and very fast formula. Fourth and very fast formula, that is bond line formula. क्या है? Bond line formula, which is you are going to use many a times during the whole organic chemistry. It is most useful for teaching and learning purpose. It is fast way to represent any organic molecule. Okay, so that is called as bond line formula. Write down bond line formula. क्या यहाँ से बेटा हटा दे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? हाँ, ये वाला पोर्शन हटा दे हम लोग. ओके, चलो गिव टाइटल फोर्थ वन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो मुझे रोक लेना. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, नाउ व्हाट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ओनली लाइंस, हम सिंपल लाइन से एक्सप्लेन करते हैं. ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. ओके, और जब भी हमारा पेन पेपर पे गिरता है तो उसको एक कार्बन मान लेते हैं. हम क्या मान लेते हैं? कार्बन. देन व्हेन इट ट्रैवल्स लाइक दिस, इट इज कनेक्टेड टू अदर कार्बन. इट ट्रैवल्स लाइक दिस कनेक्टेड टू अदर कार्बन, एंड सिमिलरली इट गोज ऑन. तो इफ यू थिंक इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन होंगे? 4. कैसे? 1 2 3 4. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ईच कॉर्नर, each crossing, each terminal is carbon. Each corner, each crossing, each terminal is carbon. समझ में आया? ये क्या है बेटा? हमारा टर्मिनल है. ये क्या है? टर्मिनल. ये क्या है? हमारा कॉर्नर्स. और कभी कभी क्रॉसिंग भी आएगा, तो क्रॉसिंग भी क्या है? कार्बन. ओके, सो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला डज नॉट शो कार्बन. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला डज नॉट शो हाइड्रोजन. ओके, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसके पास इसके सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. जैसे इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3. क्यों होने चाहिए 3? बिकॉज यहाँ पे एक बॉन्ड तो है और 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा वो. जैसे इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 2. एक ऊपर एक नीचे बना सकते हो आप. सिमिलरली इसके पास 2, इसके पास 3. So that is how you have to understand the bond line formula. Understand? And we are going to do like rigorous practice to identify them. Okay? But you understand first कि carbon and hydrogen are hidden. Okay? So in short, you can write down carbon and hydrogens are hidden. Carbon and hydrogens are hidden, and each corner or crossing or terminal is considered, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन. is considered कार्बन. ओके, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आया, जैसे हेलोजन आ गया, तो उसको वहां पे हमें शो करना पड़ेगा. We have to show that functional group. आप 100% focused रहना बेटा, because my 100% intention is to make you understand what is organic molecule. आपका 100% इंटरेस्ट यही होना चाहिए कि आज आप ये जितना भी जाओ उतना परफेक्टली समझ के जाओ. करेक्ट? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई हेलोजन आ गया तो उसको मैं शो करना पड़ेगा. जैसे लाइक यहाँ पे कोई क्लोरीन एटम अटैच है, तो मैं यहाँ पे Cl शो कर दूंगा. आई विल शो Cl. I can only hide carbon
and connected hydrogen. Now थोड़ा मैं correction कर रहा हूँ, connected hydrogen, because कभी कभी ऐसा functional group आ गया कि मान लो कि यहाँ पे OH connected है, तो मुझे इस वाले हाइड्रोजन को तो शो करना ही पड़ेगा, because it is hydrogen of what? Oxygen. It is not hydrogen of carbon. तो मैं सिर्फ इतने ही हाइड्रोजनों को हाइड करूंगा which are directly connected to what? Carbons. I cannot hide those hydrogens which are present as a part of functional group. किसी functional group के part में हो गए तो we cannot hide them. Okay. For example, if I am connecting here, here like carboxylic group COOH. So this carbon I am showing. I can hide also this carbon because it is a connected carbon, but I cannot hide this hydrogen. Okay. So this is how the molecules are formed. Okay. So एक नोट करके लिखा जाए यहाँ पे नीचे, पहले हम नोट करके लिखो कि those hydrogen which are part of functional group, those hydrogens which are part of functional groups cannot be hidden. उसको हाइड नहीं किया जा सकता. It cannot be hidden. उसको आप रिप्रेजेंट करोगे. You will represent them. क्या क्लियर है? इसमें कोई डाउट है बेटा? ओके. सो हमारे पास 4 टाइप के रिप्रेजेंटेशन वे है ना. या तो मॉलिक्यूल को सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लिखा गया होगा, isn't it? Either it is represented by the condensed structural formula, or it can be given by the expanded structural formula, or it can be represented by the bond line formula. Okay, but it is a worth that if we do practice of converting this kind of formula to the condensed form, okay, to the condensed form, so that practice we have to make, so we can understand these points, okay, which is highly required for class 11 as well as class 12. So write down practice for, yes, now मैं अभी नहीं करना बेटा मैं, you don't have to make now, no, because you know, because others are not knowing, so we have to consider कि we are a fresh student. Okay, how many carbons? 1 2 3 4 5, 4 chloro pentanoic acid, pentanoic acid, but we will not do nomenclature right now. Okay, we will come to step that. Is that clear beta? चलो, practice for converting bond line formulas to condensed structural formula, उसको short में BLF to CSF. Practice for converting. Am I audible to online students and are you writing everything? Yes, sir. Sure. Practice for converting bond line formula to condensed structural formula. You can make 2 columns. One side bond line formula, which is must be like 25% of the total area, and condensed structural formula, which is a remaining 75% of the page. Okay, make 2 columns. 2 column, one is worth about 25 and other is 75. Because condensed formula को आप short में लिख सकते हो, ये structural के लिए आपको थोड़ी जगह चाहिए. So make like these 2 columns. Okay. Are you understanding? ना मेरी भाषा समझ में आ रही है सबको? Clear है? Okay. So practice for converting bond line formulas to the condensed structural formulas. मैं कुछ bond line formulas हम बनाएंगे sequence में. Like this is the molecule. Okay. So in this molecule you can see how many carbons are there? 3. So 1 2 3. What is the trick? पहले trick समझ लेते कि we have to connect 3 carbons. Like you can connect 3 carbons like this, 1 2 and 3. You can either make a bond, no issue. Let us make a bond, 1 2 and 3 carbon, and then required number of hydrogen you have to place.
So this carbon has how many bonds required? 3 bonds. That 3 bonds will occupied by what? Hydrogen. Correct? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? CH3. It is also written reverse way. ऐसे भी लिख सकते हैं हम. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2. और यहाँ पे कितना आएगा? 3. So this is a condensed structural formula. Okay? Understood? As long as you are not showing all the bonds, it is condensed structural formula. Okay? And it is more condensed where you can write like this: CH3, CH2, and CH2. Okay? But to initially understand, you can make a bond. Okay? So I am drawing several formulas. Make them to the condensed structural formula. Make this BLF to condensed structural formula. Online students, do you understand? Give me answer. Yes, sir. Are you writing everything? Yes, sir. Okay. Start doing, brother. Start doing. Everyone has to do. सत्या हो गया? सारे के सारे कर लिए? Okay. How many carbons you can see? 1, 2, 3, and 4. So जब 4 कार्बन है तो आप 4 कार्बनों को ऐसे कनेक्ट कर लो. Then you require 3 hydrogens here. How many hydrogens here? 2. How many hydrogens? 2, and how many? 3 of them. Correct? Now look at here. ये जो compound है उसका condensation कैसे करेंगे? When there is a branch, you can see some branch is going on. Okay. So आपको longest chain देखना है. क्या देखना है? Longest chain. जिस तरफ लंबी चेन जाएगी ना उतने नंबर ऑफ कार्बन आप बना लीजिए. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay. तो आप 5 कार्बन को कनेक्ट कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट 5 कार्बन हैज टू बी कनेक्टेड. नाउ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1, 2, 3 इस नंबर के कार्बन के ऊपर एक ब्रांच है. ये भी क्या है? कार्बन. तो थर्ड कार्बन फ्रॉम लेफ्ट 1, 2, 3. थर्ड कार्बन पे क्या है? CH3. So that CH3 has to be written in bracket. क्या लिखना है उसको? ब्रैकेट में लिखना है. And then carbon and carbon. So I again explain. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 पे एक कार्बन है. 3 पे एक कार्बन हमने लगा दिया.
उसको ब्रैकेट में शो करना है एंड देन यू हैव टू पुट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 देन 2। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन जाएंगे बेटा, लास्ट में है तो 3 जाएगा, और इसके पास इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बने, इसके पास 3 बॉन्ड बने हुए 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन आएगा, isn't it? And then again CH2 and CH3. क्या नीचे भी बना सकते हो बेटा, बट हम ऐसे लिख रहे हैं ना CSS, तो हमें लेफ्ट टू राइट चलना है लॉन्ग, तो उसका ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ड्राइंग यू आर नॉट मेकिंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, वो तो स्टेट में ही जाएगा. सो अल्टीमेटली इट कैन बी रिटन लाइक दिस, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3. So what is the other way to represent this molecule? Understand that this branch is a branch of previous carbon. This branch is a branch of previous carbon, that you make sure. ये जो branch है वो इस carbon की branch होगी. Similarly इसको represent करते हैं. So how many carbons in a circle? 6. So 6 carbon को आप connect कर लीजिए like this. Connect that 6 carbons. Put the double bond where it is there. Now put the hydrogen which is required. तो यहाँ पे hydrogens कितने चाहिए मुझे? How many hydrogens are required? 2 bonds है और कितने चाहिए? 2. So we'll write 2 here, here 2, here also 2, here also 2. What about this carbon? 1 only, isn't it? And what about this? 1 only. So this is a structure condensed formula. Start making formulas like this. Okay. इसमें पूरा एक ही चेन में बनाओगे, एक ही लॉन्ग चेन में बनाओगे, आप घुमा के फिर से नहीं आओगे, बिकॉज यहाँ पे तो रिंग बनानी थी हमें, तो रिंग में तो हमने करना पड़ा कवर. यहाँ पे तो आप सीधा सीधा जाओ 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है काउंट करो, उसको जोड़ दो. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 carbons are there. So connect 12 carbon first of all. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay. Now 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है. Then just put the required number of hydrogen. So it will come 3 here, 2 2 2 here. यहाँ पे कितना आएगा बेटा 1. So it requires only 1 hydrogen. Here also it is a 1 hydrogen. Then 2 2 2 and 3. Is that done? Do you understand everybody? क्या ये बातें समझ में आ रही है? You are converting condensed form to the bond line form to the condensed form. तो भी यही का आंसर आएगा, सेम फॉर्मूला सेम बनेगा. Means we are not numbering right now. We are just making it. नंबरिंग भी नहीं कर रहे, नाम भी नहीं कर रहे हैं, फिर बनाना. हाँ, तो आप कर सकते हो ऐसे नीचे स्टार्ट, यहाँ से भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं लाइक दिस. है पूरा ट्विस्ट करके बना सकते हो. गेट्स ओके. चलो ये मॉलिक्यूल देखो, इसमें 1 2 3 4 एंड 5, थर्ड नंबर पे 2 ब्रांचेस, थर्ड नंबर पे 2 ब्रांचेस है. ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन. और ब्रांच के अंदर कितने कार्बन है? 2. ब्रांच के अंदर कितने कार्बन है? 2. सो आई विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5. थर्ड नंबर के कार्बन पे ध्यान इधर सकता है. नाउ ऑन दिस कार्बन you have 2 carbons and they are similar to this side, so you can group them. आप उसका ग्रुपिंग कर सकते हो, लाइक एक ब्रैकेट बनाओ और लिखो वहां पे C एंड दूसरा C है तो C2 एंड टोटल हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे उसको 5 एंड देन ट्वाइस एंड देन C and C. Let me explain you what happened. 1 carbon,
How many hydrogen it required? 2. 1 carbon, how many hydrogen required? 3. Total hydrogen required are 5. 2 carbon and 5 hydrogen. 2 carbon and 5 hydrogen. How many of them total are? 2. So I put twice. So on this, C2H5 is present on this carbon, previous carbon, and there are 2. Now put the required number of hydrogen here. Do you understand? Do you need any more hydrogen on this carbon? No, because already it is satisfied. 1, 2, 3 and 4 bonds बन चुके हैं. तो उसके पास तो हमें कुछ चाहिए नहीं. So this is your condensed way version. Sir. Am I audible to? Okay. Am I audible to all the students, Vida? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now listen. We are going to understand hybridization. Very important concept, hybridization. Okay. To give title, hybridization in organic molecules. Hybridization in organic molecules. Hybridization in organic molecules. In organic molecules. So what is hybridization? When orbitals become equal in shape and the energy, it is called as hybridization. Now before we understand orbitals, the word orbital itself already understood in previous chapters or some of the areas, okay, even in class 12 and class 11 both, correct? Now let me guide you that there is a 4 types of orbitals, S, P, D and S. And if I guide you, the shape of the S orbital is spherical, P is a dumbbell, D is a double dumbbell, and this is unknown, okay, unknown. So spherical and only dumbbell shaped orbitals are involved in carbon because carbon has limitation in the number of electrons you are filling in.
how many electrons you are going to fill in carbon? 6. So when you fill 6 electrons, total types of orbitals which are involved are S and P only. Okay, not any other. Understand? Only S and P orbital involved. How? Let us see. If I want to fill the 6th electron, I have two orbitals, 1s, 2s, and 2p. Okay, so I will label 1s, 2s, 2p. I'll start filling from here 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So no involvement of d orbital is present. So no hybridization of the d orbital involved here. Only S and P are involved. Correct? Now, there are, first of all, write down definition of hybridization beta. When S and P orbitals or in general you can write different orbitals become equal in energy and shape, it is called hybridization. It is called as hybridization. So what is going to happen? First of all, we will understand how many types of hybridization we will understand. There are total 3 types of hybridization we will understand. Okay, so when you classify hybridization here, there are 3 types. The one is Sp3, the one is Sp2, and the one is Sp hybridization. So here you will speak 1s and 3p orbitals become equal in energy and equal in shape. Here you will speak 1s and 2p orbitals become equal in energy and equal in shape. And here you will speak 1s and 1p orbital become equal in energy and equal in shape. Correct? So what are the characters are developed after it gets hybridized? Okay, इसके बाद क्या होगा और हाइब्रिडेशन क्यों होगा उसके बारे में बात करेंगे. So before we go, tell me if they are total 4. If they are total 4, how many S are there? 1. So 1 out of 4. How many percentage of S is there? Percentage of S? 25%. How many percentage of S here? 33.33, because the total are what? 3. And out of 3, 1 is S. So 33.33. And what about this? 50-50. So you can take them as this is 25% S character and 75% P character. Same way you can write here 33.33% of S character and 66.66% of the P character. You understand? Do you understand? What about this 50-50? 50% is S character and 50% is P character. Is that clear, beta, everyone? चलो तो पहले तो हम ये लिखेंगे. Now what happens with the character? You can write several notes here. When S character increases, unsaturation increases. When S character increases, unsaturation increases. Unsaturation increases. Pi bond forming increases. Pi bond forming increases. Acidic character increases. Acidic character increases. ये बहुत important information, इसको ध्यान में रख लेना बेटा कि when S character increases, these are the things which will increase.
ये सारी चीजें बढ़ेगी। क्या क्या बढ़ेगा? अनसैचुरेशन माने के डबल बॉन्ड माने के पाई बॉन्ड, करेक्ट। और ऑल्सो क्या बढ़ेगा? एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर मैं पूछूं विच इज द मोस्ट एसिडिक आउट ऑफ दिस, तो sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है ना, विच इज द मोस्ट एसिडिक कार्बन? sp हाइब्रिडाइज कार्बन, करेक्ट। दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड आउट ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन में। I'll show you 3 diagrams, okay, where we can understand orbital way how it is happening. मैं 3 डायग्राम दिखाऊंगा जहां पे ऐसा होता है, करेक्ट। इसको लिख लिया बेटा एवरीवन? इसको निकाल देना पूरा। चलो, नाउ ऑर्बिटल डायग्राम्स क्या होते हैं समझ में ध्यान से। ऑर्बिटल डायग्राम में ऑर्बिटल्स बनाता है। तो पहले sp3 के लिए हम वर्क करेंगे, देन sp2 के लिए, देन sp के लिए। Listen, if there is a sp3 hybridization, there is a 1s orbital and 3 p orbitals, isn't it? जिसके नाम क्या बोलेंगे हम? px, py and pz। इसके नाम px, py and pz होगा। Once they get hybridized, they all will become equal in the energy and equal in the shape. And the shape, new shape is small lobe and big lobe kind of dumbbell, like this. So all of them become like this. और इन ऑर्बिटलों में क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी दैट कि इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं? 2। तो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा मॉलिक्यूल sp3 होगा, माने कि जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ओके। एक बेटा यहाँ पे बैठ जाओ बंदी, सिट हियर। एंड आप क्या करो बेटा, आप वहां पे चले जाओ दृष्टि के बाजू में, एंड आप बेटा वहां बैठ जाओ। निश्चित पाएगा ना? पाएगा आपको बेटा? If it is not visible, then you can shift that in this bench in between. Okay. So, सुनो ध्यान से चलो। So these all are become equal shape. That is one thing. Hybridization का मतलब equal shape बन गया है, correct? अब क्या करना है? इसके अंदर एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि there is a one carbon which is having this kind of hybridization. Understood? There is a one carbon which is having this kind of hybridization. It has a 4 orbital having the same shape. तो उसके पास 4 ऑर्बिटल है। एक यहाँ पे है, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ एंड चौथा इस तरफ, करेक्ट। इट हैज 4 ऑर्बिटल having small lobe and big lobe, small lobe and big lobe. Now 4 hydrogen when they come, they will come with s orbital, isn't it? हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? s orbital. So hydrogen come with s orbital like this and it will form a bond between these two, isn't it? तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं? सिर्फ sp3। इन सभी के नाम क्या हो गए? sp3। अंडरस्टैंड? दे ऑल आर नाउ ऑनवर्ड्स कॉल्ड एज sp3। उन सभी के नाम कॉमन हो गए sp3, sp3, sp3। ओके। एंड व्हेन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, when hybridized orbitals are taking part in bond formation, the bond is called a sigma bond. क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये सारे के सारे जो बॉन्ड बन गए यहाँ पे, दे आर व्हाट? सिग्मा बॉन्ड क्वालिटी। तो इसमें जब ऐसा मॉलिक्यूल होगा, सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा हो गए और सिग्मा का सिंबल ऐसा 6 नंबर है, ओके। इसको थोड़ा इलोंगेट कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है जिसको हम मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। इज दैट क्लियर बेटा? और इसका स्ट्रक्चर ये है। चलो ये बनाओ पहले तो। ऑल ऑफ यू मेक दिस। माय एवरी नोट्स बेटा एकदम परफेक्टली बननी चाहिए, ओके। सो मेक एवरीथिंग परफेक्टली। व्हेन यू रीड नोट्स यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक,
And during the session, if you have any doubts, you can raise hand. Okay. उसका जो ओरिएंटेशन होता है जब मिक्स होते हैं ना, तो उनका ये शेप बनता है. शेप में ऐसा उनका जो ओरिएंटेशन होता है उसमें ये लोब ज्यादा एडेप्टेबल होता है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव लोब, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना ज्यादा होती है. इट इज नॉट ए रियल एरिया, इट इज द इलेक्ट्रॉन वेयर दे आर मूविंग द एरिया, ऐसा लगता है हमें. तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस डायरेक्शन में घूमता है तो इसको हम बड़ा लोब बोलते हैं. कम वैल्यू में यहाँ पे घूमता है तो इसको छोटा लोब बोलते हैं. दैट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल व्हेन इट इज गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड. इसको ऐसे बनाना है जिससे उसका मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगा उसको. जब ये कंबाइन होगा तो उसका मैक्सिमम स्टेबिलिटी वहां पे मिलेगी. ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, करेक्ट. नाउ अनदर वे, इसको हो जाने के बाद हम दूसरा एक sp2 वाला केस लेंगे, देन sp वाला केस लेंगे, करेक्ट. Am I audible to online students? Do you understand everything? Yes, sir. एक बार पोएम को भी रिसाइट करो बेटा अभी. चलो. Okay, good. So by the end of this session, I think we will remember this poem. And A4L. आपको फोन कर आया होगा फोन एक दफे ऊपर से. चलो ये क्लियर है. Now sp2 hybridization. sp2 hybridization. इसमें क्या होगा कि ये हमारे ओरिजिनल स्ट्रक्चर है. कार्बन के पास s ऑर्बिटल होते हैं और p ऑर्बिटल होते हैं. जो बाहर है वो ऑर्बिटल कौन से बेटा? s एंड p. कितने s दिख रहे हैं आपको? 1. कितने p? 3. वो टोटल 4 जो हो गए उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा s px py pz. they will form out of them only one s and 2p. only one s. I will change the number. I will take pz, px and py. Okay. Out of them only these 3 will take into hybridization formation of the lobes, bigger lobe and smaller lobe, and it is not going to take part. तो ये जो 3 है उनके नाम हो गए हैं sp3, सॉरी sp2, sp2 एंड sp2. और ये वाला कौन सा है? ये वाला सिंपली py ऑर्बिटल है. कौन सा है? py. उसका नाम चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट. अब एक कार्बन का एक एग्जांपल लेते हैं हम. C2H4 का एग्जांपल लेते हैं. 2 कार्बन लिए हमने. अंडरस्टूड. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर. वन कार्बन हैज हाउ मेनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स? 3. तो उन 3 ऑर्बिटल्स को हम ऐसे अरेंज करेंगे. 1 2 एंड 3. सिमिलरली इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स को हम अरेंज करेंगे लाइक 1 2 3. ओके. अब उनके पास हाइड्रोजन्स कितने हैं बेटा? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स दे हैव? इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे तो 1 2. इसके पास 2 आएंगे तो 1 and 2. नाउ स्टिल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ py ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल अभी भी है जिसका नाम क्या है? py. सो दैट वी विल ड्रॉ हियर. दिस इज py ऑर्बिटल और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है.
So when they are coming closer like this, they will form a double bond. So ये pi bond है जो इस sigma bond के आसपास घूमता है. I was telling you that the bond formed by the hybridized orbital are called as sigma bond. तो ये सारे bond क्या हो गए? Sigma. ये bond क्या है? Sigma. ये bond भी क्या है? Sigma. Even in between this bond is also sigma. What is pi bond? This is pi bond. This is pi bond which is moving here and there. Okay, ऐसे से घूमता जाएगा. Clear? So this is the example of ethane molecule. This is the methane. This is ethene molecule, not ethane. I will write num ethene. Write down this. Make this formula. Do you understand, online students? Hello? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay. Now, चले start करें. Okay. Sp2. Now Sp hybridization. What do you expect? What is going to happen? 1s and 1p. They are combined to form this type of structures. Correct? So in sp hybridization, again we have 1s and 3p orbitals with carbon. We will label them as, I am labeling here as a pz, px, py. Why I am specifically writing here px and py? Because in our convention of understanding the concept is x and y. X is like this and y is like this. 90 डिग्री एंगल पे है उसके. इसके लिए मुझे इन दोनों को ही कंबाइन करना होगा और इनके थ्रू दो ऑर्बिटल्स ऐसे बनेंगे. दे हैव इक्वल शेप एंड इक्वल व्हाट एनर्जी. चलो तो इसका नाम क्या बनेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टू? दिस टू sp. And what are the other these two? They will remain their names, identity by themselves. उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होने वाली है. उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होने वाली है. Okay, we will take example of ethyne molecule C2H2. C2H2. Understand, we have two carbons. They both have two orbitals, sp hybridized orbitals. So one orbital is coming on this side and other is coming on this side. Then one on this side and other is on other side. Correct? So hydrogens come with their s orbital. Hydrogens come with their s orbital. Correct? अब देखो जरा, जब पाई बॉन्ड बनेंगे तो कैसे बनेंगे? So this is a p orbital, px orbital, which is like this. This is px orbital. They overlap
like this to form one first pi bond. Similarly, this is py orbital, and they overlap like this. They are at 90-degree angle of each other. They are at 90-degree angle of each other. तो देखो जरा यहाँ पे क्या है, ये x axis है और ये वाली y axis है, and they form two pi bonds. So this is pi bond, this is pi bond. Which are sigma bonds? This is one sigma, second and third. I repeat, ध्यान से सुनो, जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है वही सिग्मा बॉन्ड्स बनाती है. The orbitals which are taking part in the hybridization, they can only form sigma bonds, and the rest are forming pi bonds. So how many sigma bonds in this case you can find with one carbon? 4 sigma bonds. One carbon can form how many sigma bonds? 3 sigma bonds. One carbon can how many sigma bonds? 2 sigma bonds. You understand? So जो पर्टिकुलर कार्बन इन्वॉल्व होता है उसके लिए हम सिग्मा एंड पाई का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. ओके, so this is the three diagrams which represent ultimately sp3, sp2 and sp. Okay, detailed geometrical features of all these three we will understand in hydrocarbon chapter. Okay, detailed geometrical structures like इसका एंगल क्या होता है, तो 109.4 डिग्री, 10928 डिग्री, दैट इज sp3 हाइब्रिडेशन में एंगल होता है. इसका एंगल होता है 120 डिग्री और इसका एंगल होता है 180 डिग्री. ओके, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर और इसका शेप होता है लीनियर. ओके, दे आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूज यू विल अंडरस्टैंड. ओके, इतना क्लियर है बेटा? कोई डाउट्स है इसमें? तो शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या हम ऐसा डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are strictly obtained from living organisms? No, because होलर ने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला जो उसने वाइटल फोर्स थियरी को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया. ओके, दैट इज इनऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक बना लिए, है ना? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक बनते हैं. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में कि दे आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन? नो, दे कंटेन कार्बन. ओके, हम स्ट्रिक्टली ना नहीं बोल सकते, लेकिन इट इज नॉट ऑल द टाइम ट्रू, नॉट ऑल द टाइम ट्रू, बिकॉज सेवरल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज आल्सो कार्बन प्रेजेंट. चलो, उसके बाद क्या करा हमने? व्हाट इज डन आफ्टर दैट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ formulas. Okay, molecular formula, condensed structure and bond line formula. Then hybridization. ये hybridization चल रहा है बेटा. Okay, now listen. I will draw. We will going to do one practice. What are we going to do? कि मैं कुछ molecules बनाऊंगा, BLF बनाऊंगा, bond line formulas बनाऊंगा. What you have to do? You have to find out how many number of sigma bonds present, how many number of pi bonds present, how many number of sp3 carbons present, how many number of sp2 carbons present, okay, and how many sigma bonds present between sp3 and sp2 carbons. Okay, it is one of the most important concept generally asked in a basic way, है ना? Basically हमें पूछते हैं. पहले इसको हटाना पड़ेगा. ये हो गया बेटा? हाँ, इसको हटा दे. चलो, write down. इसको एक बार बोल दो. ओके, आठ कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है?
7 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 4 कार्बन के लिए। हेक्स किसके लिए होता है? नॉन 4, ठीक है। चलो नाउ आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये टाइप है। आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, number of sigma and pi bonds, number of sigma and pi bonds. So we will make a table. आप एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल में आपको काम करना है। I will write bond line formulas. Okay. So first bond line formulas. second कॉलम जो है उसमें आपको लिखना है नंबर ऑफ sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन, उसके बाजू में लिखना है बेटा sp2 कार्बन, और उसके बाजू में लिखना है हमें sp कार्बन। So we will write these 3 data. Then after we'll write how many number of sigma bonds. How many number of pi bonds. Then finally we will write sigma bond between sp3 sp2 or sp3 sp carbon. Sigma bonds between sp3 sp2 or sp3 sp or even sp2 sp carbon. करेक्ट। ये आप कॉलम्स बना के रखिए। चलो यहाँ पे सिर्फ नंबर आएंगे, सो डोंट मेक अ लार्ज विड्थ, सिर्फ नंबर आने वाला है। ये जो जगह है वहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। करेक्ट। Am I audible to all the students online? Yes, sir. I repeat, this is something very important you are developing. If you are not knowing, understand each and everything, okay? And that will help you a lot in your 12th, 11th, okay, JNC, every part. Chalo beta. Number 1, first compound. First compound. Okay. The molecule is given. We are not going to make a structural formula, but direct by looking the molecule, we can identify. Okay. I will do for you. आपका 100% focus यहाँ पे होना चाहिए. After this activity, I will give a break of around 10 minutes. Okay. Then we will restart. Okay. So, bond line formula. Can you see any double bond here? No. Okay. Let us go one by one. This carbon is sp3 because it has all the single bonds. ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, वो जो ये जो कार्बन नहीं दिख रहा है आपको, एक्चुअली वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये जो कार्बन नहीं दिख रहा है वो आपको, उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? सही। कैसे? क्योंकि एक बॉन्ड तो बना हुआ है और 3 हाइड्रोजन उसके आसपास हो गए। संदीप, आपको समझ में आ रहा है? डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर एक पॉइंट होता है तो उसको एक कार्बन मानते हैं। Then there is another carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. Every corner and every terminal is carbon. Every corner, every terminal, every crossing is carbon. And हर एक कार्बन की कैपेसिटी है कि वो 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना? 4। अगर वो डबल बॉन्ड बना चुका है तो 2 ही बनाएगा। अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 बनाएगा। लाइकवाइज
तो अभी इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 1। देखिए ना बेटा, इस कार्बन के पास तो एक ही बॉन्ड है, तो उसके पास क्या हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। और जब ऐसा होता है कि वो सिंगल बॉन्ड कैरी करता है तो उसको sp3 कार्बन, क्या बोलते हैं हम? sp3। इन शॉर्ट sp3 कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन। चलो, तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। इसका लेबलिंग क्या करूं मैं? sp3। इसके पास 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और बन सकते हैं, बट दे आर सिंगल बॉन्ड, तो ये भी क्या हो गया? sp3। क्यों sp2 आया? sp2 का मतलब क्या है बेटा? कि उसके पास डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड माने कि एक ही से दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो sp2 आएगा। ये भी क्या आएगा? sp3। ये भी sp3 और ये भी sp3। चलो, अब सुनो कि sp3 कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। अगर वो टर्मिनल वाला हुआ तो 3 हाइड्रोजन कैरी करेगा। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, ओके, इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हमें सिर्फ कार्बन को वैलेंसी फुलफिल करनी है, करेक्ट? फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी sp3 कार्बन? हाउ मेनी sp3 कार्बन? 5। ऑल द 5 आर sp3। 0 sp2, 0 sp। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? अब सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो बनता ही है। अब ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज द इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन। दिस आर सिग्मा बॉन्ड। जितनी लाइन दिख रही है ना, वो सारे सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड, दे आर सिग्मा बॉन्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ऑल द हाइड्रोजन मेक सिग्मा बॉन्ड्स। हाइड्रोजन का एक ही स्वार्थ है कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और कुछ नहीं है। हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स, तो जितने भी हाइड्रोजन लगाओगे वो सारे क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड्स। यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे कितने आने वाले? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस 4। हाउ मेनी टोटल सिग्मा? 16 सिग्मा बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड। और यहाँ पे पाई बॉन्ड तो है ही नहीं। ओके, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन, मैंने ऐसा लिखा है सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp3 लिखा है कहीं पे भी? sp3 नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। डू यू अंडरस्टैंड? क्या ये बात समझ में आई? सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग का मेथड क्या है कि इसके पास अभी 5 सिग्मा, ये 4 सिग्मा बॉन्ड तो है। दिस इज 1 सिग्मा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, करेक्ट? अब 3 हाइड्रोजन जब यहाँ पे लगेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड, 3 मोर। यहाँ पे 2 लगेंगे तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे 2 लगेंगे तो ये दोनों भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, एंड देन दिस 3 आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कैसे काउंट करें हमने? कार्बन के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सिग्मा बॉन्ड्स लाइक दिस वे। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? मंदिर, हाँ, पीछे आपको समझ में आया? प्रेरक, चलो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे एंड यू हैव टू काउंट। स्टार्ट डूइंग important calculation, important questions. Second, थोड़ा जल्दी से करेगी बेटा। आते नहीं बेटा एक्सेस कोई भी। Okay, make these molecules first.
जो कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो sp3 होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो sp2 होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन आ गया तो sp3 हो गया। करेक्ट? तो आप सॉरी sp हो गया, आई मेड मिस्टेक। इस कार्बन की कैरेक्टर क्या है बेटा? sp3। इस कार्बन को देखो डबल बॉन्ड में है तो ये sp2 हो गया, और ये भी डबल बॉन्ड में है तो ये भी sp2 हो गया। डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट कोई भी जगह पे। तो sp3 sp2 एंड sp2। नाउ इस कार्बन के पास पहले सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं। दिस इज वन सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सेकंड सिग्मा बॉन्ड, ओके, वन सिग्मा सेकंड सिग्मा। अब इसके पास ये पाई बॉन्ड है तो वन सिग्मा सेकंड सिग्मा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिग्मा बॉन्ड, सिक्स एक ही हाइड्रोजन आएगा ऊपर, 7 and 8। There are 8 sigma bonds. I repeat, how many sp3 carbons? 1. How many sp2 carbons? 2. How many sp? 0. How many sigma bonds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 sigma bonds. How many pi bonds? 1. Now it is very important. How many pi bonds present between sp2 and sp2? यहाँ पे sp2 sp2 का कोई लिखा है मैंने? नहीं। How many sigma bonds present between sp3 and sp2? 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1। Do you understand? क्या समझ में आया बेटा? हमें सिग्मा बॉन्ड के काउंट लिखने हैं ऐसे प्रोपोर्शन में। चलो इसमें ये कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड में दिख रहा है बेटा? नहीं। तो ये sp3, ये भी sp3 कार्बन, ये भी क्या आएगा? sp3 कार्बन। ये वाला कार्बन यस sp2, वेरी गुड। और ये हो गया sp2। चलो सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं। पहले तो कार्बन लिख लेते हैं बेटा, 1 2 and 3। 3 are sp3 and 2 are sp2। sp2 कार्बन कभी अकेला नहीं होता है। sp2 कार्बन कभी अकेला नहीं होता है, क्योंकि उसको sp2 बनने के लिए क्या चाहिए? दूसरा कार्बन तो चाहिए ना बॉन्डिंग के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो sp3। अब इसके 0 sp कार्बन, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए? 13 सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? 1। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन sp3 sp2? बताओ। एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, 2 है। दैट इज काइंड ऑफ जेएनसी क्वेश्चन बेटा, तो मैंने इसको एक कॉलम ऐड करके वो ऐड कर दिया है। सत्या समझ में आ रहा है बेटा? पीछे कृतिका, देखो क्या पूछा है बेटा? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन sp3 sp2? यहाँ पे sp3 sp2 है, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 1। हाँ यहाँ पे देखो sp3 sp2 है, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। करेक्ट? चलो नेक्स्ट, इसमें आ जाओ। चलो सर क्या हुआ? सर देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना? यस देवस्ते बोलो। सर तो सेकंड वाले में पाई बॉन्ड 7 नहीं होंगे? पाई बॉन्ड तो बेटा एडिशनल बॉन्ड होता है, सॉरी वही सॉरी होता सर, पाई बॉन्ड नहीं, सॉरी सर, सिग्मा बॉन्ड 7 है। नहीं? सेकंड वाले में सिग्मा बॉन्ड काउंट करते बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 8 एंड 9, यहाँ पे 9 आना चाहिए बेटा, 7 नहीं 9। चलो बेटा देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है बेटा। मैंने ऑनलाइन पूछा तो यहाँ पे 8 कार्बन ही आएगा बेटा। देवस्ते, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलो अभी इसमें आओ। ये सारे के सारे कार्बन क्या है बेटा? हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो sp2। बेंजीन इज अ काइंड ऑफ सिस्टम
where every carbon carries same character, sp2 character. इसको aromatic compound बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Aromatic compound. You will understand that portion. चलो ध्यान दे. How many sp3 carbons? 0. How many sp2 carbons? 6. ये क्या हो जाएगा? 0. चलो सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 सिग्मा बॉन्ड्स है. करेक्ट. यहाँ पे हर कोई कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स है. उसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए. वो एक हाइड्रोजन एडिशनल सिग्मा बॉन्ड है. जितने भी हाइड्रोजन आपको दिखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड. तो हाइड्रोजन को डायरेक्टली काउंट कर लो. चलो नाउ पाई बॉन्ड्स कितने बेटा? 1 2 and 3. पाई बॉन्ड्स आर 3. And how many pi bonds present between sp2 sp2? sp2 sp2 यहाँ पे लिखा नहीं मैंने. sp2 sp2 लिखा है नहीं. बट अगर मैं sp2 sp2 बोलूँ तो कितने हैं वैसे तो? 3. sp3 sp2 है कोई? sp3 कार्बन ही नहीं है. तो यहाँ पे तो सारे वेरिएशन अलग अलग है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0. अंडरस्टूड. चलो बेटा इसमें दिस इज sp3 sp3, ये sp2 हो गया और ये भी क्या हो गया? sp2 और ये वाला ऊपर वाला sp3 कार्बन. करेक्ट. ये कार्बन भी sp3 है. हाउ मेनी sp3 कार्बन यू कैन काउंट? 1 2 3 4. 4 sp3 कार्बन. हाउ मेनी sp2 कार्बन? 2 कार्बन. हाउ मेनी sp कार्बन? 0 कार्बन. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 1 2 3 4 5 6. Sorry, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. क्या 17 हो गए? मैं एक बार फिर से काउंट करता हूँ. देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. 17 sigma bonds है. कितना है? Okay. How many pi bonds you can see? 1 pi bond. How many pi bonds present between sp3 sp2? देखो sp3 sp2 के बीच में यहाँ पे कौन बॉन्ड है? 1. यहाँ पे भी एक बॉन्ड है 2. फिर sp2 एंड sp3 में यहाँ पे एक बॉन्ड है. तो ये आपका 1, ये 2 and 3. आंसर आएगा 3. डू यू अंडरस्टैंड? क्या बातें समझ में आ रही है? चलो अभी यहाँ पे देखो. sp3 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 sp2 sp2. करेक्ट. चलो काउंट करो. पहले तो अंदर वाले काउंट कर लेते. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ये तो 4 बॉन्ड बन गए ऑलरेडी अंदर. तो कितने आएंगे? 17 आएंगे ना. फिर से देखो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5. एक भी बेटा 1 2 3 4 5. यहाँ पे 5 + 3 + 3 + 3 17 हो गए. तो यहाँ पे कितने आ गए? 17. sp3 कार्बन कितने हैं बेटा? यहाँ पे 4. sp2 कार्बन कितने हैं? 2. sp कार्बन 0. एंड देन पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1. बट sp2 अकेला पाई बॉन्ड पूछा है. ओके 1. एंड sp3 sp2 के बीच में पाई बॉन्ड्स कितने हैं? तो 1 2 3 एंड 4. 4 sp3 sp2 के बीच में है. करेक्ट. समझ में आ रहा है बेटा? आर यू डूइंग एवरीवन एक्टिविटी? दिस एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर बेटर वे. बेटा इसमें काउंट करना है ना. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यहाँ पे कुछ नहीं.
यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बन गया बेटा, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन गए ना यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। और भी कुछ मॉलिक्यूल्स है लाइनअप में, इसको लिख लो पहले, स्ट्रक्चर को लिख लो बेटा। काउंटिंग तो आप खुद से करना अगर रह गया है तो। माने कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझ में आई अभी? 6, then write down 7th. Now we'll introduce triple bond. Along with the double bond. चलो खरांशु समझ में आ रहा है? हाँ, पीछे बेटा हर्षवर्धन, अंडरस्टूड? जब आपको ऐसा मिले तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ओके, अंडरस्टैंड, दिस इज कार्बन, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। नहीं, हमने उसको सेपरेशन ऐसे किया है, कार्बन 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 कार्बन, ये सारे जो ब्लॉक है, मैंने सारे टाइप्स के फॉर्मूला यहाँ पे बनाए हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेड है। Online students, are you doing your activity? Yes, sir. Yes, sir. दो पाई बॉन्ड, पहला वाला सिंगल, बाकी सारे पाई। मिस्टेक समझ में आ रहा है? चलो बेटा करो, स्टॉप क्यों है? एक सिग्मा है, बाकी दो पाई है। और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है वो sp होता है, तो ये कार्बन sp है, ये भी क्या है sp, इसके पास भी तो ट्रिपल बॉन्ड है ना नीचे की ओर, इसके पास भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये sp है और ये भी sp है। प्रेरक हो गया, स्टार्ट डूइंग, व्हेन यू डू एक्टिविटी इट विल बी डन। कर लिया, हो गया सारा, मींस बैठने से नहीं होगा, यू हैव टू डू सम एक्टिविटी। रौनक समझ में आ रहा है बेटा? चलो भाई स्टार्ट करें। देखो इस वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो इट विल बी कॉल्ड एज sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, दिस इज द सिंगल बॉन्ड sp3, इसके पास इधर ट्रिपल बॉन्ड है, ओके,
तो इस कार्बन को हम बोलेंगे sp और इसको भी क्या बोलेंगे sp कार्बन। Now how many sp3 carbons? So 1. How many sp2 carbons? 2. How many sp carbon? 2. How many sigma bonds? Let us see. बेटा यहाँ पे एक बॉन्ड जो होता है ना वो परमानेंटली सिग्मा तो होता है, पहला बॉन्ड तो कार्बन का सिग्मा ही होता है। The first bond which is formed between carbon and carbon, it is by default what? Sigma bond. So a sigma bond, sigma, sigma, sigma. So 1, 2, 3, 4. Now we have to count the hydrogens. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं बेटा? हमारे पास 4 तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2, 1 और 2। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 1, बिकॉज इसके पास 1, 2, 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी है। इट नीड्स ओनली 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1, 2 + 1 3। यहाँ पे 3 कैसे आएगा बेटा हाइड्रोजन? यहाँ पे 1 और 2 ही आएंगे ना। तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड और यहाँ पे एक ही आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितना होगा? 4 + 6 10। So 10 sigma bonds present. How many pi bonds? 1, 2, 3. There are 3 pi bonds. Understood? आर्यन समझ में आ रहे थे? चलो, how many sigma bonds present between sp3 sp और sp2 sp? देखो ये sp3 sp2 है तो यहाँ पे 1 आ गया, sp3 sp है तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हमें ये दोनों सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके लिखना है वहां पे 2। अंडरस्टूड? टोटल लिखना है 2। करेक्ट? चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से। ये हो गया बेटा sp2 sp2। यहाँ पे क्या आएगा? sp3 sp2 sp2। ये वाला क्या है? sp2, ये sp3 और ये sp2 कार्बन। यहाँ पे देखो बेटा sp3, ये हो गया sp कार्बन sp कार्बन sp कार्बन sp कार्बन एंड sp3 कार्बन। करेक्ट? ईच कार्बन इन बिटवीन इज sp कार्बन, इजंट इट? यहाँ पे बेटा sp2 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 एंड sp3, इजंट इट? चलो यहाँ पे देखो बेटा sp2 sp2, ऊपर वाला sp3, ये sp3, ये sp2, ये sp3, यहाँ पे sp2 और ये sp3। करेक्ट? आप सिर्फ कार्बन sp3 कार्बन के काउंट लिख रहे हो, सिग्मा पाई आप घर पे कर लेना एडिशनली, वो कॉलम्स बाद में फिलअप कर देना। चलो लिख लो कितना हुआ sp3 वाला है यहाँ पे केस। 1, 2 sp3 कार्बन। हाउ मेनी sp2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isn't it? Correct? And sp is what? 0। चलो यहाँ पे देखो 2 sp3, 1, 2, 3, 4, 4 sp कार्बन, यहाँ पे 0। 1, 2, 3, 4, 4 sp2, sp3 1 और ये हो गया 0। 1, 2 sp3 3, 4, 1, 2, 3, 4, ओके 4 and 4। करेक्ट? दोनों ही 4 4 है। क्लियरली समझ में आ रहा है? So it is very important to understand the carbons. Okay? तो sp3 है कि sp2 है? एक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, मुझे उसमें बताओ इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं? कितने पाई बॉन्ड बेटा? 2। इसमें इस वाले कार्बन का नेचर क्या है? ये कौन सा है बेटा? डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? तो sp2, ये भी क्या है? ये क्या है? ये sp2 है कि sp है? sp है। क्या है? ये sp है, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या है बेटा? देखो 2 पाई बॉन्ड है।
जब 2 पाई बॉन्ड वाला कार्बन आएगा तो क्या आएगा, sp। तो ये एक स्पेशल केस है, sp2 जिस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, sp कार्बन। तो उसके इस तरफ भी पाई बॉन्ड है, इस तरफ भी पाई बॉन्ड है, तो sp हो गया ना। क्लियर? ओके, तो एक बार पोएम बोल दो बेटा। अच्छे से नहीं बोल रहे आप, आवाज नहीं आ रही, मैं इसको निकाल देता हूँ। नहीं, कोई कोई तो बोल ही नहीं रहा है ना। अभी वो गीत गाना हो तो कोई, है ना, पुष्पा वाला गाना तो बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला के गाएगा शो में। बोलो बेटा, मीत हित बोलो। वो सिक्योरिटी वाले अंकल नीचे बैठे हैं ना, वो देखने आने चाहिए एक बार कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा ब्रेक देते हैं, है ना। 5 to 10 मिनट का ब्रेक है ना। तो गर्ल्स पहले आप लोग फ्रेश होने तो बाहर जाइए, है ना, फिर ये रूम थोड़ा खाली हो जाए, इसके बाद बॉयज को भेजते हैं। 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं बेटा, एंड देन वी आर असेंबल अगेन। Online students, after exactly 10 minutes, you have to come back.
Hello, am I audible to online students? Yes, sir. Yes, sir. Let us start. Okay. In the last one, you know, want to count sigma bonds. Sigma bonds count करना है. Okay, sigma bonds को मैं ग्रीन कलर से बना लेता हूँ. देख लो. यहाँ पे दो आएंगे, दो सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, ये दो हाइड्रोजन है माने के. यहाँ पे एक दो तीन बॉन्ड बने तो एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा. ओके, इधर 3 आएंगे. तो इसके अलावा जो ब्लैक है वो तो है ही. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए. Isn't it clear? So sigma bonds and pi bond calculation is done. समझ में आ गया? आपको वहां पे पाएगा, नहीं तो यहाँ पे आ जाओ. ये दोनों पतले तो हो जाएगा. बैक को आगे रख दो. That will be okay. चलो. Yes. So now we are understanding degrees. अब डिग्रीज ऑफ कार्बन होते हैं. ध्यान इधर. डिग्रीज ऑफ कार्बन, डिग्रीज को कैसे पढ़ते हैं हम लोग? जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू वन कार्बन, दैट इज डिग्री. So there are several concepts written in the checklist. Degrees of carbon, degrees of hydrogen, sorry, degrees of hydrogen भी है, लेकिन degrees of carbon उसके साथ में हम degrees of hydrogen लेंगे. Then degrees of halides, degrees of alcohol, degrees of amines, and then finally we'll move toward the IUPAC nomenclature. ये बेसिक समझने के बाद ही वो समझ में आएगा. 5 कार्बन के कंपाउंड्स को कौन सा रूट वर्ड मिलेगा? 6 कार्बन के कंपाउंड को 4 कार्बन, 3 कार्बन, 7 कार्बन, 9 कार्बन, 10 1. Okay, so that is highly necessary. Okay, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि जिसके नाम में रूट वर्ड ना हो. कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसके IUPAC नोमेनक्लेचर में रूट वर्ड्स ना हो. So write down degrees of carbon and hydrogen. Degrees of carbon and hydrogen. Degrees of carbon and hydrogen. बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है कि जिसमें हमें डिग्रीज के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाएंगे. We have to understand the way in degrees. So what is primary? Means there are 4 types of carbon: primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, and quaternary carbon. Okay. So write down first primary carbon. Primary can be written like this. 1 के ऊपर हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे. Primary carbon. It is also called as primary word. Sometimes it is written primary. Primary carbon. A carbon which is connected to only one carbon directly. A carbon which is connected to only one carbon directly. Write down definition. A carbon which is connected to only one carbon directly. Okay. Similarly, secondary carbon. Secondary carbon. A carbon which is connected to two carbons directly. Two carbons directly. Tertiary carbon. Tertiary carbon. A carbon which is connected to
3 carbons directly. A carbon which is connected to three carbons directly, and this is quaternary carbon. Quaternary carbon. Carbon which is connected to 4 carbons directly. The definitions clear, beta? These definitions are clear? Okay. Now let us understand this definition by taking several examples. Okay. So I am drawing one compound. 1, 2, 3, 4, 5, 6. CH3. Here I am taking CH2. I am taking CH3. I am taking CH3, CH2 and CH3. I am taking CH3. Here I am taking CH3 and this is CH3. So this molecule is organic molecule, whereas different types of carbons are present. Let us find out what are the degrees of their carbons. इनके डिग्रीज क्या है? अब ये कार्बन कितने कार्बनों से कनेक्टेड है डायरेक्टली? 1 से ही कनेक्टेड, तो इसकी डिग्री है प्राइमरी. ये कार्बन कितने कनेक्टेड है? 2, तो ये कार्बन क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन हो गया. ये कार्बन कितने कार्बनों से कनेक्टेड है? 3, 1, 2 and 3, so it is a tertiary carbon. ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है? 4, so it is a quaternary and this is also quaternary. And what about this? This is primary, 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 primary. क्या किया मैंने पता है? मैंने चेक नहीं किया कि प्राइमरी है कि नहीं, मैंने सीधा लिख दिया प्राइमरी. क्यों लिखा? जो टर्मिनल वाले कार्बन होते हैं हमेशा क्या होते हैं? प्राइमरी. If they are not in double bond, they are always primary. Okay? और they are all primary. बाकी सारे तो हमने लेवल. ये वाला क्या है बेटा? This secondary. Now primary carbons have how many hydrogens? 3. Secondary carbons have how many hydrogens? 2. Tertiary 1 and quaternary no. So quaternary hydrogen जैसा word ही exist नहीं करता है. The word itself does not exist quaternary hydrogen because अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके साथ कोई हाइड्रोजन आने की संभावना 0 होती है. There is no quaternary hydrogen exists. हाइड्रोजन में 3 ही कैटेगरी है. कौन सी 3 कैटेगरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. द हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कार्बन, it is called as primary hydrogen. The hydrogen which is connected to secondary carbon, they are secondary hydrogens, and hydrogens which are connected to tertiary, they are called as tertiary hydrogens. So if I want to make the primary carbon, primary hydrogen, secondary carbon, secondary hydrogen, tertiary carbon, tertiary hydrogen, and quaternary carbon. मैं अगर ये बना लूं, करेक्ट, तो उसमें क्या क्या डेटा आएगा? हमें डेटा लिखना है यहाँ पे. प्राइमरी कार्बन कितने हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 प्राइमरी कार्बन. हर प्राइमरी कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है? 3. 7 3 जा, so you will put 21 here. Okay, you can count or you can directly write. Okay, secondary carbons कितने हैं बेटा? 1, 2, 2 ही है ना? 1 and 2. So 2 secondary carbons. How many secondary hydrogens? Secondary के पास 2 होते हैं, तो 2 2 जा 4. Tertiary carbons कितने हैं? 1.
ये 1 एक टर्शियरी कार्बन एक मात्र एक ही है। चलो तो टर्शियरी कार्बन कितना हो गया 1, और उसके बाद हाइड्रोजन में क्या होता है 1। क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं हमारे पास 1 and 2, तो यहाँ पे आएगा 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन शुड मैच योर कंपाउंड कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन शुड मैच योर कंपाउंड कार्बन। कार्बन काउंट करो 7 + 2 9, 9 + 1 10 + 2 12। क्या है 12 कार्बन वाला कंपाउंड है टोटल, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, correct? So this is how you have to do such some practice, okay? इसी कुछ प्रैक्टिस करते हैं बेटा। चलो इसका ऐसा डेटा बना दो और इसको 1 नंबर बोल दो, I'm giving you second number, okay? You understand online students? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हो गया? This carbon is primary carbon, so it is a primary carbon. ये भी primary, ये भी primary. Primary 1, primary 1 and primary. What about this crossing? Quaternary. And this crossing? Quaternary. Okay, पहले हम लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे बताओ primary, primary, primary and primary. This carbon is secondary. It is connected to 2 carbons. This carbon is secondary, connected to 2 carbons. And what about this? Quaternary, correct? Now here, primary, primary, primary and primary. This is secondary, this is secondary, this is secondary, and this is secondary. And that is quaternary in center. You can tell your mother, ma'am, Mama Swastik has how many primary carbons? Okay. Today you ask question to your mama that Mama Swastik has how many primary carbons? You tell me. I know. Okay. Understood?
ask this question today and have some fun. Okay, now primary carbons के count लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18. Correct? Primary hydrogens are 18. You have to focus 100% here, beta. Prerak, 100%. Okay. 4 quaternary carbons are of how many? 2, and everything else is absent, isn't it? Here 1 2 3 4. 4 primary, 4 3s are 12. Secondary are 1 are 2. So 2 2s are 4, and then quaternary is 1 only. 1. Correct? Isn't it? Means प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने होते हैं? 3. तो एक प्राइमरी कार्बन होगा, उसके साथ होने वाले हाइड्रोजन्स को हम 3 करके वहां पे लिख लेंगे. करेक्ट? चलो यहाँ पे लास्ट में 1 2 3 एंड 4 देन 12. सेकेंडरी बना 1 2 3 4 4 2 जा 8. टर्शियरी तो है नहीं, क्वाटरनरी 1 है. Is that clear? So will you be able to identify degrees of carbon by looking at the molecule? So degrees of carbon, sigma bond, pi bond, okay, they are known to you now. इतना ऐड कर लो बेटा. Online students, do you understand? Yes, sir. So, Yes, sir. Okay. चलो डिग्रीज ऑफ हैलाइड्स क्या हो गया बेटा? ये स्ट्रक्चर बना के रख दो सिर्फ. ये तो आपको समझ में आ गया ना? विल यू बी एबल टू काउंट? काउंटिंग बाकी है तो बाद में कर लेना. स्ट्रक्चर बना दो अच्छे से. ओके. डिग्रीज ऑफ हैलाइड्स. डिग्रीज ऑफ हैलाइड्स. नाउ हैलाइड कब बनता है? जब हैलोजन एटम हमारे हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में अंदर एंटर होता है. एंड हैलोजन एटम कौन से है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अगर हम उसको यहाँ पे एंटर करवाए तो एक हाइड्रोजन को बाहर जाना पड़ेगा. So whenever halogen atom enters to the hydrocarbon, it becomes alkyl halide. क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि जितने भी कार्बन वाले स्ट्रक्चर है उसको अल्काइल बोलते हैं कॉमन. एंड अल्काइल हैलाइड का मतलब हैलोजन एंटर्ड है. अल्काइल ग्रुप को इटसेल्फ हम आर लिखते हैं. We write R. So whenever I have written R, उसका मतलब समझना कि ये कोई अल्काइल ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे. नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन may vary, but उसमें होंगे. So now we are writing degrees of halides. So what is halides? It is Rx. What? Rx. And what is X stands for? Halogens. Halogens में फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा या तो आयोडीन होगा. एस्टाटाइन नहीं होता है. एस्टाटाइन इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. करेक्ट? तो उसको हम यहाँ पे लेते नहीं. आर का मतलब क्या है? कि एनी अल्काइल ग्रुप. सो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का कोई ब्रांच. अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आई हैव दिस कंपाउंड वेयर ऑल द हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. और उसमें अगर कोई हैलोजन एंटर हो जाए, जैसे Cl को हम एंटर करवाए, तो Cl क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. तो Cl will replace hydrogen, so hydrogen will go out, hydrogen becomes minus. और इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे अभी हम? इसमें क्या आ गया है यहाँ पे?
Cl. तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स. दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज हैलाइड. अल्काइल हैलाइड. नाउ वी वांट टू फाइंड द डिग्री ऑफ हैलाइड. तो पूछे कि इस हैलाइड की डिग्री क्या है, तो ऐसे फाइंड करते हैं. ध्यान से सुनना. हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन और कितने कार्बनों से कनेक्टेड है? यहाँ पे तो कोई कार्बन है ही नहीं. ओके, तो अगर कार्बन से कनेक्टेड नहीं है तो इसको मिथाइल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कि एक ही कार्बन इटसेल्फ, मिथाइल. लेकिन मान लो कि यहाँ पे एक कार्बन होता, नहीं तो उसको इथाइल तो बोलते हैं. लेकिन एक कार्बन है. हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, सेंट्रल वन, वो कितने कार्बनों से कनेक्टेड है? वन. सो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड. व्हाट? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. इफ इट इज कनेक्टेड टू टू कार्बन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. इफ इट इज कनेक्टेड टू थ्री कार्बन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. तो ओनली टर्शियरी तक आता है, क्योंकि एक पोजीशन तो खुद ने उसने ऑक्यूपाई करके रखी है. हैलाइड can be classified as primary, secondary and tertiary. You understand? And the definition I am going to write. Okay, first of all आप एक छोटा सा ये इक्वेशन लिख के रखो जो हैलाइड का फॉर्मेशन दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? हैलाइड का फॉर्मेशन. मेरी भाषा समझ में आ रही है ना बेटा आप सबको? है ना? हाँ, कोई कन्नड़ नहीं है ना यहाँ पे? कन्नड़ लैंग्वेज में नहीं जानता हूँ. आई एम जस्ट can speak three languages: Hindi, English, Gujarati. Any other language I don't know. If you know, then you can teach. Okay. Mandip knows some Punjabi languages. Buddha. Chalo. Yes. Now we will write beta primary alkyl halide. अब definition कोई बनाएगा बेटा? Somebody can form the definition. Yes. Primary alkyl halide. Definition must be in English, huh? No other language. Primary alkyl halide. Yes, Dhruvi. Halide which is connected to a carbon which is connected to only one other carbon. Yes, you can speak this is as a halogen atom. Halogen atom. Now speak halogen atom again. Halogen atom connected carbon is connected to only one carbon. Halogen atom connected carbon is connected to only one atom, one carbon. It is called as primary alkyl halide. Write down by your own. I repeat the definition. You listen carefully and write down in English only. Okay. Halogen atom connected carbon. मैं पहला डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए. Halogen atom connected carbon if connected to only one carbon. Halogen atom connected carbon if connected to only one carbon is called primary alkyl halides. Is called primary alkyl halides. You understand everybody? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना इसमें? Okay. Now can you write secondary one? What could be the definition in English? Halogen atom connected carbon is connected to two carbons directly. Okay. उसके बाद तो भले उसके पास कितने भी कार्बन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वहां पे डायरेक्टली वर्ड होना चाहिए. डायरेक्टली सिर्फ दो ही कार्बनों से कनेक्टेड है. उसके बाद तो भले कितने कार्बन हो, उससे कोई लेना देना नहीं. सिमिलरली टर्शियरी. ये तीनों डेफिनेशन आप लिखोगे अभी अपने नोट्स में. बेटा चलो डेफिनेशन लिखते जाओ. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. पहले अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि यू आर लर्निंग वेरी फ्रेशली. ओके, एंड यू कैन लर्न एनीथिंग. ओके, मेरी बेटी जानती है टर्शियरी कार्बन क्या है. डॉक्टर नोज टर्शियरी कार्बन. ओके, इज 5th स्टैंडर्ड. आप किसने में बेटा? 12th में हो, तो आप तो जानोगे ना. है, मैं सिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा ना. छोटी वाली प्राइमरी कार्बन जानती है. छोटी
हाँ, वो जानते हैं एसिड्स केमिस्ट्री क्या है, उनको पता है। चलो हो गया बेटा, तीनों डेफिनेशन लिख लिए। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी समझ में आ गया। I am making several structures here. You identify what the degree it is. Okay. BLE, BLF जो है ना, वो बेस्ट वे है कन्वे करने का, फास्ट वे से, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया और मैंने एक मॉलिक्यूल लेके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। Now I am asking you, what is the degree of this halide and this halide? This one, beta. What about this? Halogen connected carbon is this. This is the bond. This is the bond. Halogen connected carbon is this. It is connected to two carbon. It means it is secondary. So this is secondary halide, secondary alkyl halide. This whole is alkyl and this is halide. Secondary alkyl. What about this? Primary. This carbon is connected to only one carbon. So it is a primary alkyl halide, isn't it? And what about this? Halogen. Tertiary. This carbon is connected to three more carbons. Okay, so it is a tertiary alkyl halide. Okay, write down these things. Halide की degree समझ में आ गई? Halides are very famous compounds used in our daily life. Okay, like chloroform. Chloroform was used to make a patient anesthesia करने के लिए, anesthetic के form में use होता था, pre-operative treatment के लिए। किसी ऑपरेशन को करना है तो पहले उनको बेहोश करना पड़ेगा। So halogen, chloroform वाला compound, chloroform itself was used initially. Now it is replaced with more advanced compounds. Okay, because chloroform सुंघाने से वो बेहोश तो होता है, लेकिन उसका रिकवरी टाइम कुछ भी हो सकता था। तो बिटवीन ऑपरेशन अगर जाग गया तो तो क्या करते थे कि वहां पे वो डॉक्टर्स बैठे रहते थे कि जब वो जागेगा दूसरी बार सुंघा देगा, अगर इन बिटवीन हुआ तो। बट nowadays more advanced compound like single calibrated doses are available injection में। तो वो नया कंपाउंड, उसका एक छोटा सा नीडल, वेरी फाइन नीडल इज इंसर्टेड इन द बॉन्ड वेनम में इंसर्ट करते हैं एंड इमीडिएटली बेहोश हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, उतना फाइन नीडल। एंड दैट हैज आल्सो टाइम कि ये इतना डोज दिया तो 10 आवर्स, इतना डोज दिया तो 5 आवर्स। ओके, तो उसके आजू बाजू हाफ एन आवर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो उतने टाइम तक बेहोश रहेगा। तो हैलाइड्स आर वेरी यूजफुल कंपाउंड्स। ओके, एंड लोकल एनेस्थेसिया अवेलेबल, माने कि अगर मुझको इतना ही पार्ट एनेस्थेस करना है तो इतना भी हो सकता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके, so this is the degrees of halides. Now degrees of alcohols, give title. Degrees of alcohol. Degrees of alcohols. अगर अल्कोहल्स बनाने हैं तो आपको अल्काइल के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? OH। क्या जोड़ना पड़ेगा? OH. OH is a functional group which is connected with the carbon. ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो अगर मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा, क्या एंटर करना पड़ेगा? OH, और यहाँ पे क्या आएगा? OH। इसको बोलेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अब इसमें सेम डेफिनेशन है कि अगर OH ग्रुप एक कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल, करेक्ट। But if it is connected with the carbon which is itself connected to one more carbon and only one directly carbon, it is called as primary alcohol. क्या बोलेंगे? Primary. Similarly secondary and tertiary. So what could be the definition you can tell? When OH group is connected to a carbon, is connected to only one carbon, it is called as primary alcohol. Okay, so write down accordingly all the three definitions.
and then we'll give you some compounds. ये लिखते जाओ बेटा, पहले ये लिखना है आपको, then 3 definitions. Am I audible and are you understanding, online students? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चाय भिजवाओ बेटा वहां से, आप तो घर पे हो ना। देवस्य, Yes, sir. send a cup of tea please. क्या हुआ? Okay, shall I speak the definition again? देखो बेटा, primary alcohol की definition. When OH connected carbon, write down, but everything you have to write down. Everything you have to write down. Okay. When OH connected carbon is connected to only one carbon, it is called as primary alcohol. It is called as primary alcohol. Now accordingly secondary लिख दो और tertiary लिख लो. Secondary and tertiary. ये चीजें हमें कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले पता होनी चाहिए, है ना। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे उससे पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी फीलिंग ट्रबल, आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा। ये सारे टर्मिनोलॉजीज ही है, मान लो एक शब्द टाइप के डिफिनेशन है सारे। Okay, what about the degrees I have made? Secondary, this is primary and this is primary. Okay, and this is tertiary. Why it is both primary? Because this carbon is connected to one carbon directly. Similarly, this carbon is connected to one carbon. So what are we looking exactly? We are looking at a functional group connected carbon. तो अगर more generalized definition बना दूं कि कोई भी functional group ले ले हम, अगर वो functional group वाला कार्बन उसके वाला माने कि उसको अटैच वाला कार्बन कितने कार्बनों से कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री बन जाएगा. This is a functional group. The functional group containing carbon is connected to how many carbon is defined as a degree of that particular compound. So more generalized definition I am going to write. Okay, so write down general definition. First of all, make these 3 compounds, label them primary, secondary, tertiary. Okay, you identified? Yes, this is secondary, this is primary, and this is tertiary. सिर्फ एक जगह पे हमें थोड़ी दिक्कत आती है फंक्शनल ग्रुपों में, जो है अमाइंस, उसमें अलग तरीके का डिग्री है उसका. तो मोर जनरलाइज्ड डेफिनेशन लिखो बेटा. जनरल डेफिनेशन, functional group containing carbon is connected to how many carbons? Functional group containing carbon is connected to
how many carbons defines the degree of that compound. Defines the degree of that compound. Okay, now degrees of amines. That is what exceptional case in the generalized definition. What is definition? Functional group containing carbon is connected to how many carbons defines the degree of that compound. Now degrees of amines. Degrees of amine. चलो. Now amines बनते हैं अमोनिया से. एंड अमोनिया आप सबको पता है बेटा NH3 क्या है NH3. अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के कोई भी अल्काइल ग्रुप या तो कार्बन वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन लगा दिया जाए तो वो एक अमाइन बन जाएगा. करेक्ट. So actually they are derived from ammonia. And what is the structure of ammonia? Trigonal pyramidal. क्या structure है इसका? Trigonal pyramidal. So if the three hydrogens are present, it is called as ammonia. क्या बोलेंगे इसको आप? Ammonia. अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दूं तो क्या होगा बताओ? अगर मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया? अल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन. क्या बोलेंगे? Now what I am mentioning here, see, understand. This nitrogen is connected to how many carbons? It is a degree. This nitrogen is connected to how many carbon? It is a degree. Okay. Similarly, if this nitrogen is connected to how many carbons, that is defining the degree. वहां पे क्या था कि वो कार्बन कितने और कार्बनों से कनेक्टेड है, यहाँ पे डायरेक्टली वो नाइट्रोजन कितने कार्बनों से कनेक्टेड है. So it is a secondary amine, isn't it? And this is a tertiary amine. Only 3 replacement can be done, isn't it? तो इसको बोलेंगे tertiary amine. और ये अमाइन हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा? अमाइन. और एक चीज ध्यान में रखो कि हर एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर. और वो लोन पेयर भी एक बॉन्ड बना सकता है. वो लोन पेयर भी itself it can create one bond. So if I make the bond here, you understand that lone pair is given to some alkyl group. That lone pair is given to some alkyl group and already 3 तो थे ही. तो इसको बोलते हैं quaternary ammonium salt. क्या बोलेंगे? Quaternary ammonium salt. It is not stable, but it is a salt. Okay, so it is called as quaternary ammonium salt. Please write down all this. Make it done. क्या यहाँ तक का क्लियर है बेटा? Online students, do you understand? Yes. Yes, sir. डिग्रीज ऑफ अमाइन को पहचानने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. So little practice is required to understand the degrees of amine, to identify the degrees of amine.
इसको हटा दे बेटा। Write down practice identifying degrees of amine. Practice identifying degrees of amine. Practice identifying degree of amine. Done बेटा? Is it done? Dhruvi? Okay. चलो. Now, if compound is written like this, CH3NH2, is it primary, secondary or tertiary? The nitrogen has only, जैसे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4. नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड. अब नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन तो ले लिए हैं, अब इसके पास एक ही जुड़ा हुआ है उस तरफ कार्बन, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी अमाइन. तो इसका मतलब है ये क्या है? प्राइमरी अमाइन. So I am writing several structures. You find out the degrees. What you have to do? You have to find how many connected bonds with nitrogens are there. Okay, that is the degree. नाइट्रोजन कितने कार्बनों से कनेक्टेड है, तो उसको डिग्री हम समझ लेंगे. करेक्ट. चलो, फाइंड आउट दिस. CH3 CH2 CH2 NH2 NH2 NH2. Okay. डिग्रीज ऑफ अमाइंस की प्रैक्टिस है. सभी नाइट्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन को तो हम हाइड करके रखते हैं. डन. ओके, चलो बेटा, अभी
ये कार्य मैं करूं, फाइंडिंग द डिग्री। चलो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, कितना होगा बेटा, प्राइमरी। इसमें डिग्री क्या होगा, प्राइमरी। एक और तरीका भी है, जरा ध्यान से देखा हो, वो एच पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो हर बार कभी काम में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बोल सकते हो कि अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी होगा, नाइट्रोजन के पास अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी होगा, और अगर 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी होगा। लेकिन हर बार वो काम नहीं करेगा, है ना। जब डबल बॉन्ड आ गया तब थोड़ा लोचा हो जाएगा। देखो इसमें तो सेकेंडरी है, हाइड्रोजन नहीं है तो भी। तो हमें अल्टीमेटली चेक क्या करना है कि उसके कनेक्शन कितने कार्बनों से है। ओके, तो इसका कनेक्शन कितने कार्बनों से है, इसका कनेक्शन नाइट्रोजन का कितने कार्बन से है, 1। इसको आप डिग्री में मिस्टेक मत कर देना, आगे वाले केसेस में ऐसा पड़ा था ना कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जिस कार्बन से कनेक्टेड हो वो अभी, हाँ? तो वहां पे ध्यान रखना कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन ही देखना है प्राइमरी, फिर इसका सेकेंडरी। यस, दिस इज प्राइमरी। ओके, दिस इज सेकेंडरी। ओके, दिस इज टर्शियरी, दिस इज टर्शियरी, दिस इज टर्शियरी एंड दिस इज टर्शियरी। राइट, क्लियर है, डिग्रीज क्लियर है। सेकंड में ये क्या, ये नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, इसके लिए प्राइमरी, और 2 तो हाइड्रोजन है, जैसे इसमें है वैसे इसमें। क्लियर है, डिग्रीज ऑफ अमाइन। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएगा उसकी डिग्रीज फाइंड करने के लिए यही कॉन्सेप्ट चलेगी, है ना। एट और पिरिडीन ये ऊपर वाला है, हाँ, इसको पिपेरिडीन बोलते हैं, मिथाइल पिपेरिडीन। बट पिपेरिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स आर नॉट देयर इन योर सिलेबस, होल सिलेबस। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक को बोलते हैं कि जब पूरी रिंग में अलग अलग एटम हो, यहाँ पे नाइट्रोजन भी और कार्बन भी है, तो इसको हेट्रो बोलते हैं। अगर सारे कार्बन हो गए तो कार्बोसाइक्लिक या तो होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। दैट विल कम लेटर, वो आएगा, लेकिन इसका नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं है हेट्रोसाइक्लिक रिंग का। होमोसाइक्लिक रिंग का नॉमेनक्लेचर है, इसको हटा दे अभी। इलेवेंथ इज टर्शियरी। ये कोई कार्टून का स्ट्रक्चर नहीं है, कार्टून में ऐसे होते हैं ना, ऐसे लाइट आती है तो लाइट ऐसे। इसको हटा दे, हो गया। बस रैंडमली बनाते जाओ, डिग्री फाइंड करते जाओ। मैंने मैंने सोच के बनाया था, लेकिन आप अभी समझ गए हो तो रैंडमली बनाते जाओ। हाँ, तो जब हम IUPAC करेंगे तो ऐसा ही होगा। चलो, नेक्स्ट इज दैट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या डिग्री ऑफ, हमने कितने डिग्रीज पढ़े बेटा, कार्बन का डिग्री पढ़ा, हैलाइड का पढ़ा, अल्कोहल का पढ़ा, कॉमन जनरलाइजेशन ले लिया, फिर डिग्रीज ऑफ अमाइन, एंड नाउ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके, गिव टाइटल, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन कम है तो उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। देखो वो वर्ड लिखना है बेटा, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI। ओके, एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब इसको ध्यान से समझना, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। Am I audible to online students?
इस सभी का मतलब एक ही है कि इसमें कोई नंबर मिलेगा आपको। नंबर कोई भी हो सकता है, 1 से लेके कोई सा भी नंबर हो सकता है, करेक्ट। इसका डेफिनेशन है कि हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन required to saturate an unsaturated compound. I repeat, how many mole of H2 required to saturate an unsaturated compound? Okay, so definition लिखते बेटा, write down. It is the number of hydrogen. It is number of H2, number of mole of H2 लिखना बेटा, number of mole of H2 required to saturate an unsaturated compound. And unsaturated compound, और एक लिख लो, एक केस बन सकता है और भी, कंपाउंड और टू ओपन क्लोज चेन, टू ओपन क्लोज चेन और टू ओपन ए क्लोज चेन। देखो, अगर हम अल्केन्स पढ़े तो सारे अल्केन, अब यहाँ पे 3 नाम आएंगे, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। अल्केन्स, उनके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2। यू मस्ट हैव डन दिस इन क्लास 10, इजंट इट? चलो, अल्कीन, यस, अल्कीन का मतलब है कि CnH2n एंड अल्काइन, यस, CnH2n-2। तो ये फॉर्मूला जो अल्कीन की है ना, वो एक और जगह पे अप्लाइड हो जाती है। अब समझना ध्यान से बेटा, दिस इज समथिंग वी आई एम कनेक्टिंग विद द अदर कंपाउंड्स आल्सो। ये अल्कीन की फॉर्मूला एक और जगह पे अप्लाइड हो जाती है, साइक्लो अल्केन्स पे। कहाँ पे? साइक्लो अल्केन्स, माने कि अल्केन ही हो गया, डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन वो क्लोज चेन होगा, है ना, तब भी यही फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन अल्कीन, so let us take C4H8। कितना लेते हैं हम? C4H8। कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा? 4 कार्बन को स्टेट चेन में कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा दे। चलो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन लगाते हैं तो यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, करेक्ट। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। अब इस 4 कार्बन को हम ज्वाइन कर लेते हैं, 1 2 3 एंड कनेक्ट कर लिया इस तरफ से, करेक्ट। 1 2 3 4, ये हो गया साइक्लो अल्केन। क्या इसमें डबल बॉन्ड है? नहीं है। डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा? इसमें नहीं है। तो ये क्या हो गया? अल्केन। डबल बॉन्ड दिखता है तो अल्कीन, 2 दिखते हैं तो अल्काइन। इसमें इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। इसके पास 2 एंड 2, टोटल 8 हो गया। तो क्या ये फॉर्मूला अल्कीन को अप्लाइड है? यस, ये फॉर्मूला आल्सो अप्लाइड टू द साइक्लो अल्केन। तो हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड और टू ओपन ए क्लोज चेन। अगर मैं इसमें एक H2 डालूंगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। आई रिपीट, अगर मैं इसमें एक H2 डालूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? +2। हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे? +2। तो व्हेन आई ऐड +2 हाइड्रोजन, ओके, इट विल बिकम अल्केन, सैचुरेट। या तो मैं इसमें अगर H2 डाल दूं तो ये ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन। और क्या बन जाएगा? सिंपल अल्केन। इन दोनों ही केस में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। So what is degree of unsaturation? You have to find the number of mole of H2 required to make unsaturated compound to the saturated compound. इसमें कितने मोल H2 जाएगा? 1 मोल H2 बोलना है, 1 मोल H2 जाएगा
तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हुआ 1। इसका DU, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DU, तो DU कितना हुआ इसका 1, इसका भी DU कितना हुआ 1। तो जितने पाई बॉन्ड हो गए वही उसका DU हो गया, बिकॉज एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक H2 चाहिए, 2 को ब्रेक करने के लिए 2 चाहिए, 3 को ब्रेक करने के लिए 3 चाहिए। तो वट एवर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर देयर, उतना ही उसके मोल ऑफ H2 चाहिए। ओके, और उसको बोलेंगे हम DU वैल्यू। अच्छा, अगर एक रिंग हुई तो एक H2 चाहिए, अगर 2 रिंग फ्यूज हुई तो 2 H2 चाहिए, 3 रिंग हुई तो 3 H2 चाहिए। तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करना है, so we will go by counting the number of rings present. Okay, now tell me what is the DU of this compound? What is the DU of how many rings? 2 rings. ये एक रिंग है ना बेटा, और ये भी एक रिंग है। So what is the DU of this compound? 2. You require total 4 mole of hydrogen to break this molecule. Okay, to make a straight chain. Understood? And here you require only 1. ये क्लियर हो रहा है बेटा? So how to find the DU? DU कैसे फाइंड करते हैं? By finding the number of pi bonds या तो number of closed ring structure. करेक्ट? तो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। ये क्लियर है? इसको लिखो पहले। हाँ, मीन्स अल्टीमेटली हमें अनसैचुरेशन चाहिए, अनसैचुरेशन के थ्रू ही इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकलता है। ओके, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अदर वे। हाउ टू फाइंड? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसेस, 2 केसेस। नंबर 1 केस इज आइदर इट इज अल्कीन। तो मैं क्या बोलूंगा? फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अल्कीन या तो अल्काइंस। आई विल से alkenes or alkynes, I will say find number of pi bonds is equal to DU. वो क्या हो गया? Degree of unsaturation. Okay, that many mole of H2 required to make it alkane. अल्केन को अल्केन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? हाइड्रोजन। चलो यहाँ पे अगर -2 है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा? अल्केन। और यहाँ पे 2 ऐड कर दिए तो अल्केन। तो व्हेन यू ऐड हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को हम H2 ही बोलते हैं ना, करेक्ट? और ये रिडक्शन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, करेक्ट? तो कभी कभी कुछ लिटरेचर में रिडक्शन वर्ड भी यूज किया होगा, ओके, है ना, बट अभी नॉर्मली समझना है तो H2, करेक्ट? चलो, तो फाइंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड समझ में आया? अच्छा, दूसरा केस क्या है? क्लोज्ड चेन्स, या तो इसको क्या बोलते हैं हम कॉमनली? साइक्लो अल्केन्स। इन वर्ड आए तो सिंगल बॉन्ड, इन आए तो डबल बॉन्ड, आइन आए तो ट्रिपल बॉन्ड। जब ऐसे केसेस हो गए तो फाइंड नंबर ऑफ, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स। रिंग्स को ओपन करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? दैट इज व्हाट योर DU वैल्यू। क्लियर है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कुछ प्रैक्टिस करते हैं बेटा। नंबर 1 प्रैक्टिस। व्हाट इज द DU वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड? यू फाइंड आउट एंड टेल मी। व्हाट इज द DU वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड? 3। एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? 3 मोल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम चाहिए 6, लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा है कि मोल ऑफ H2, तो कितने मोल ऑफ H2 चाहिए? 3। so your DU value is equal to 3. Okay, understood? What is the DU value of this compound? Again 3, 1, 2 and 3 pi bonds, so DU value is 3. Okay, what is the DU value of this? एक ही रिंग है तो एक ही पाई बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड चाहिए हमें, सॉरी एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो 1, 4, what is the DU value बेटा? So DU value is 2. DU माने कि डिग्री ऑफ
unsaturation. Make it this then. चलो. Degree of unsaturation. Do you understand, online students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. समझ में आ रहा है? उसको HDI भी बोलते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में लिखा हो एमसीक्यू में HDI, क्या बोलोगे आप इसको? फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स. ओके, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस जैसे होता है ना, जैसे ह्यूमन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेफिशिएंट ह्यूमन डेफिशिएंसी इंडेक्स नहीं, क्या बोलना है इसको? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. हाँ हाँ, तू बना सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट. क्लियर है? इसमें डेफिशिएंसी किसकी है? हाइड्रोजनों की है. इसके लिए हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स. एंड इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं ना. एक H2 को एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मानते हैं, इसके लिए इसका नाम क्या होगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. इज दैट क्लियर? तो ऑल द थ्री डेफिनेशन समझ में आ रही है? चलो, हमारी पोएम बोलनी है मेरा फिर से एक बार. ओके, सबने नहीं बोला, रौनक नहीं बोला, फिर से बोलो भाई. ओके, यस रौनक, यू आर टेलिंग समथिंग. फोर्थ में बेटा 2 रिंग है, तो इसमें हाइड्रोजन काउंट करो. एज ही सेड, लेट अस काउंट द हाइड्रोजन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अच्छा, कार्बन काउंट करो. हाइड्रोजन हो गए 18, याद रखना 18. कितने कार्बन हो गए बेटा? कार्बन 10 कार्बन. अगर 10 कार्बन होते हैं तो अल्केन में जाने के लिए, स्टेट जनरल में जाने के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 22. कितने कम है? 18 से 22 में जाओ, कितना? 4 कम है. 4 हाइड्रोजन का मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो इसका ड्यू क्या हो गया? 2. सो दैट इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई. या तो रिंग काउंट कर लो, वही आंसर आ जाएगा, या तो पाई बॉन्ड काउंट कर लो, वही आंसर आ जाएगा. लेकिन चेक करना है, क्रॉस चेक, तो ऐसे चल सकते हो. तो ठीक, जितना भी हो सकता है. Whatever the number of rings are present, organic molecules are widely present. Do you clear? Now, एक और वर्ड है जिसको पढ़ेंगे, homologous series. I think you have understood this word before. Homologous series 10th में. कितना डिफरेंस होता है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में? 14U का डिफरेंस होता है, या तो CH2 का डिफरेंस होता है. So now you are coming to your comfortable zone. Homologous series and IUPAC में ये सारी बातें थी, वो बेसिक्स था इसका. कार्बन के आसपास होने वाली घटनाएं थी, अलग अलग डेफिनेशंस थी, अलग अलग, है ना, डिग्रीज एवरीथिंग. So write down homologous series. You are very close to take the flight. है ना? IUPAC वाली फ्लाइट में जाने के लिए कृपया, आप बहुत नजदीक है, थोड़ा अलर्ट हो जाइए.
देखो बेटा, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस सीरीज ब्यूटाइल। होमोलोगस सीरीज, इसके 3 कैरेक्टर हैं। होमोलोगस सीरीज के 3 कैरेक्टर, अगर ये 3 चीजें फॉलो होती है तभी वो होमोलोगस सीरीज बनेगा। करेक्ट? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर 3 चीजें फॉलो करता है तभी वो होमोलोगस सीरीज बनेगा। सो नंबर 1 राइट डाउन। There must be difference of CH2 or 14 AMU. Write down. There must be difference of CH2. CH2 का मतलब है कि एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? CH2 का डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए बेटा? CH2 का। अब दूसरी कंडीशन, they must be belonging to the same functional group. उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। so they must belong to same functional group. They must belong to same functional group. तो ध्यान इधर। And third, they must have same method of preparation. They must have same method of preparation. They must have same method of preparation. उनकी बनावट की पद्धति क्या होनी चाहिए? सेम। लेबोरेटरी में जब भी बनाएंगे एक ही तरीके से बनाया होना चाहिए। ओके, तो ये तो ज्यादा हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन ये दोनों थियोरेटिकल में आपको चलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल चलिए एक अल्केन सीरीज लेते हैं हम और एक अल्कोहल सीरीज लेंगे, अल्कोहल एंड अल्केन। रूट वर्ड आपने बताया बेटा मीथेन। मीथेन आपको इसका जनरल मॉलिक्यूलर भी फॉर्मूला भी बताया है। तो अगर मीथेन में एक कार्बन होता है तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 CnH2n+2 के हिसाब से। अच्छा इथेन बताओ, तो इथेन का फॉर्मूला बताओ C2H6। नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कार्बन? 1। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन? 2। तो ये जो डिफरेंस आया वो किसका आया? CH2 का आया। अगर मैं इसका एटॉमिक मास निकालूं तो कितना है? 12। और इसका बेटा टोटल मिला के 2। टोटल कितना हो गया? 14U। 14U का डिफरेंस होगा या तो CH2 का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स। पहला रूल अप्लाइड। सेकेंड रूल, क्या दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है? अल्केन अल्केन, देयरफॉर सेकेंड रूल अप्लाइड। एंड थर्ड, इनको बनाने की पद्धति अभी सेम ही है। Okay, that part we are not discussing, but they are prepared by same method. Third applied, then only homologous series is applied. Okay, so write down this. Prepare formulas of methane to decane by applying general molecular formula CnH2n+2. Prepare molecular formulas of methane to decane. Okay, मीथेन टू डेकेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए। रूल क्या है? CnH2n+2। दो तो हमने बनाए, बाकी के बना लो। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन।
फॉर्मूला बन गए सारे। C10H22, लास्ट वाला C10H22। समझ में आ रहा है निश्चित, मनदीप? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर्यन? ओके, सिमिलरली अगर मैं अल्कोहल लूं, अल्कोहल में CH3OH है जो फर्स्ट मेंबर है, उसको ऐसे पढ़ते हैं मीथेन ऑल। क्या पढ़ते हैं? मीथेन ऑल। आई एम स्पीकिंग डिफरेंटली, मीथेन प्लस ऑल, मीथेनॉल। अगर कंबाइन कर ले तो लास्ट वाला ई ड्रॉप हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। अगर मैं इथेनॉल बनाऊं तो C2H5OH। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 6 है ना, आपका इथेन तो बना हुआ है, उसमें हाइड्रोजन कम करके OH लगा दो तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल। इसमें से हाइड्रोजन कम करके क्या लगा दो? OH, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा इथेनॉल। एंड लाइकवाइज यू प्रिपेयर ऑल द डेकेनॉल तक के कंपाउंड्स, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, नाम भी लिखते जाना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल अप टू डेकेनॉल विथ देयर फॉर्मूलाज। यहाँ पे आएगा C3H7OH, C4H9OH, and likewise this is propanol, this is butanol. Okay, is that done? डेकेनॉल का फॉर्मूला OH, yes, C10H21OH। तो इवन दे आर, अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे ना इन दोनों में, तो CH2 का ही डिफरेंस है, तो दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। करेक्ट? उसके 3 कंडीशन होते हैं। कौन से 3 कंडीशन? नंबर 1, they must have a difference of CH2 or a 14 AMU or so U. They are made up of same functional group. मैं इसको और इसको लेके homologous series नहीं बना सकता हूँ। Correct? And third, they are having the same method of preparation. इतना क्लियर है? तभी आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। बोर्डिंग पास का मतलब है कि इस ट्रेन में जाने के लिए एक टिकट होता है ना, तभी मिल सकता है। इफ यू कैन नॉट लर्न दिस, यू आर नॉट अलाउड टू बोर्ड योर ट्रेन और प्लेन। ओके, एंड डेस्टिनेशन है IUPAC। इफ यू वांट टू रीच टू द IUPAC डेस्टिनेशन, देन यू मस्ट लर्न दिस थिंग, है ना। हम बैग पैकेज करते हैं ना, वो बैग का पैकेजिंग था ये, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। करेक्ट? कोई कुछ छूट नहीं गया ना बेटा? पैकेजिंग करते करते कुछ छूट नहीं गया ना? यू आर रेडी विथ एवरीथिंग? अदरवाइज बीच में से वापस भेजूंगा मैं। हाँ, करेक्ट? नहीं,
चलो चलो, now first of all we will identify all the functional groups, उसके suffix, उसके prefix, और उसको आज हम रेडी करेंगे. That is what we have to do today. आज हम आइडेंटिफिकेशन ही करेंगे. ओके, आज हम एक्चुअली स्टार्ट नहीं करेंगे. नो रूल विल बी स्टार्टेड और नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट द रूल एंड एवरीथिंग. बट आज हमें सारे के सारे 16 फंक्शनल ग्रुप्स के नाम, उसके सफिक्स, उसके प्रीफिक्स और हमारा राइम, वो जो हमारा पोएम है वो याद रहना चाहिए. ठीक है, इतना याद रहना चाहिए आज के आज. चलो राइट डाउन functional group. Functional group introduction. Functional group introduction. Functional group introduction. चले बेटा, ये एक फाइनल चेकलिस्ट है. ये चेकलिस्ट बना रहे हैं हम लोग. चलो बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कॉलम बनाएंगे. बाजू में लिखेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट फंक्शनल ग्रुप ऑन पेपर. ओके, आपको सबको पता है आर का मतलब क्या है. आर का मतलब क्या है? कार्बन, या तो कार्बन का कोई भी चेन, वो कितने भी लेंथ का हो सकता है, वो कार्बन का चेन होगा. आर लिखा हो तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन में आर का यूज करेंगे. ओके, थर्ड आपका उसका सफिक्स एंड प्रीफिक्स, जो भी हम यूज करने वाले अकॉर्डिंग. चलो नेम. Am I audible to online students? Yes, sir. Representation, suffix and prefix. Prefix. Okay, total there are 16 we generally use. There are more than 16, but we generally use 16. चलो 1, पहले हम लिस्ट बना लेते हैं. अल्केन, अल्कीन, देन अल्काइन. ये 3 कॉमन है. देन अल्काइल हैलाइड या तो हैलाइड्स. दैट इज राइट, अल्काइल हैलाइड्स. अल्कोहल्स, ये तीनों को साथ में स्टडी किया जाता है. इन दोनों को साथ में स्टडी किया जाता है. देन यहाँ से लेके 6 से लेके और 7 जो है उसमें कॉमन चीज है CO. क्या है? CO. CO को बोलते हैं कार्बोनाइल. क्या बोलते हैं? तो कार्बोनाइल वाला फंक्शनल ग्रुप यानी कि CO वाले फंक्शनल ग्रुप्स. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले अल्डिहाइड्स. यहाँ पे आएगा कीटोन. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर आएगा एस्टर, एमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड. सॉरी, एसिड क्लोराइड हो गया. एसिड, इसको क्लोराइड की जगह पे कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? हैलाइड. इट इज राइट, हैलाइड. इसको एसिड एनहाइड्राइड. ये कितने हो गए? 7 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7. फिर अमाइन, फिर नाइट्राइल्स, फिर नाइट्रो एंड लास्ट में ईथर. ये 16 नेम्स हमें रेडी करना है. 7 स्टडी के लिए. देखो 11th में हम ये करते हैं, सिर्फ 11th का पोर्शन ये होता है.
11th का पोर्शन सिर्फ अल्केन अल्किन अल्काइन है। 12th में हम लोग अल्काइल अल्कोहल के चैप्टर्स अलग है। ये 11th चैप्टर है आपका, 10th चैप्टर, 11th चैप्टर। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपका 12th चैप्टर, ओके। और अमाइंस आपका 13th चैप्टर। और बाकी सारे जो है वो उसके सपोर्ट में उसी चैप्टर्स में आते हैं, लेकिन उनके अलग चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाते। स्टडिंग टुगेदर, हाँ, तो इन दोनों को साथ में स्टडी करते हैं। देन ऑल दिस ग्रुप्स, ओके, या ये 13 एंड देन अमाइन। चलो, अल्केन अल्किन अल्काइन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि ये अल्केन माने के कार्बन का एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। तो जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। अल्किन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, एंड अकॉर्डिंगली उसके हाइड्रोजन। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड एंड लाइक दिस। उनके सफिक्सेस है एन, एंड आइन। प्रीफिक्स में आप प्रीफिक्स वाली हर एक जगह पे आप कुछ मत करना, वो जगह खाली छोड़ देना, खाली छोड़ना, ओके। डोंट पुट डैश इवन, ओके। विल कम टू लेटर दैट पॉइंट, बाद में हम उस पॉइंट पे आएंगे। अल्काइल हैलाइड्स, उसको हम बोलेंगे आर एक्स। आर का मतलब क्या समझोगे, कार्बन के कोई भी कंपाउंड, कार्बन के कोई भी चेन, करेक्ट। चलो, अल्कोहल में बोलेंगे आर ओ एच। इसके लिए सफिक्स नहीं है, इसके लिए प्रीफिक्स है। यहाँ पे जगह खाली छोड़ देना, यहाँ पे लिखना है आपको हेलो, और हेलो के बाद में आपको डैश लगाना, बाद में डैश लगाना है, माने कि इट इज स्टार्टिंग वर्ड एंड देन यू हैव टू राइट समथिंग लाइक क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, लाइक दैट। इसमें आएगा ऑल, ये बाद में लगेगा, लास्ट में लगेगा। सफिक्स का मतलब लास्ट में होने वाला वर्ड, ओके। अल्डिहाइड्स को आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा डिटेल में, या तो शॉर्ट में आर सी एच ओ, आर सी एच ओ। अंडरस्टैंड, कार्बोनाइल मस्ट बी प्रेजेंट है, उसके अंदर सीओ होना ही चाहिए, अभी वो अल्डिहाइड है, ओके। उसके लिए अल, फिर यहाँ पे कीटोन, तो आर सी ओ आर, या तो शॉर्ट में लिखने का तरीका है आर सी ओ आर, कंडेंस वे में। सर इसको एक्सपांडेड फॉर्म, इसको कंडेंस फॉर्म। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब दिख नहीं रहा, लाइट की रिफ्लेक्शन। व्हाट हैपेंड, लाइट्स में नहीं दिख रहा है, ओके। 10 मिनट। चलो, ये क्लियर है। इसमें सफिक्स आएगा ऑन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ ओ एच, क्या आएगा, आर सी ओ ओ एच, जिसको हम बोलेंगे आर सी डबल ओ एच। इसका सफिक्स है ऑइक एसिड, ऑइक एसिड, क्लियर। ऑइक एसिड। एस्टर आर सी ओ ओ आर, आर सी ओ ओ आर, और इसको कॉमनली सिंपल लिखते हैं आर सी डबल ओ आर। इसमें आएगा ओ एट, ओ एट। अमाइड्स
RCONH2, सिंपली लिखा जाए तो RCONH2, RCONH2, और या तो RCONH2 डायरेक्टली लिख सकते हैं. अमाइड itself it's a suffix. अमाइड, एसिड क्लोराइड और एसिड हैलाइड, RCOX, X की जगह पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है. ओके, इसको RCOX भी बोलते हैं. इसका सफिक्स है ऑयल, OYL, हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड. देन एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, RCOOCOR, RCO अगेन OCOR. इसको ऐसे लिख सकते हैं कि RCO ट्वाइस O, RCO 2 बार रिपीट हो रहा है इस तरफ और इस तरफ से, तो RCO ट्वाइस O. इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड. अमाइंस, RNH2, या तो वो क्या होगा बेटा R2NH, या तो क्या होगा वो R3N. ये कौन सा हो गया प्राइमरी, ये क्या हो गया सेकेंडरी, ये क्या हो गया टर्शियरी. वो अमाइंस कोई वैसा भी हो सकता है, उसमें कॉमन सफिक्स है अमाइन. क्या हो गया कॉमन सफिक्स अमाइन. नाइट्राइल, तो RCN, नाइट्राइल को क्या बोलेंगे CN, और इसका सफिक्स है नाइट्राइल इटसेल्फ, नाइट्राइल, नाइट्रो, RNO2, RNO2 जिसमें प्रीफिक्स लगेगा इसको बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रो प्रीफिक्स लगेगा. एंड ईथर, ROR, माने कि इसमें ऑक्सीजन बीच में, 2 R के बीच में, इसमें भी प्रीफिक्स लगेगा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी. एल्कोक्सी लिखा. इसको याद करो अभी के अभी. वी विल रिमेम्बर राइट नाउ. 2 थिंग्स वी विल टेक बाय डेफिनेटली टुडे. इनकी रिमेम्बरिंग प्रोसेस, क्योंकि सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन अभी याद रहने चाहिए विद सफिक्सेस विद प्रीफिक्सेस. ये वाली जगह छोड़ के रखो. वी विल डू दैट लेटर. ये रहा ना, क्या वो नहीं तो वो एक ही है, लिस्ट में अलग है. हाँ तो ऊपर नीचे लिखने में गलती, टाइपोग्राफिकल एरर हो गई. ये मैंने 11 o'clock ही टाइप किया है, थोड़ा हमारा सेशन थोड़ा इजी बने इसके लिए. शायद टाइपोग्राफिकल एरर रहेगा. आई विल करेक्ट एंड विल गिव बैक. वो चलेगा ऊपर नीचे कोई भी. हाँ हाँ, तुम्हें से एक काम है क्या? हाँ तो दैट वी विल ऐड. क्लियर है? याद करो अभी इसको. Try to write down at the back side of your notebook. Okay, try to remember one way or the other way. With after 5 minutes, I am asking. Okay, पूछूंगा. आप हर एक को 2 चीजें बोलनी है. एक तो हमारा सॉन्ग और ये पोएम, सॉन्ग, राइम, जो भी बोलना है बोलो. याद है, हो जाएगा 5 मिनट सब कुछ. स्टार्ट. 5 minutes started. याद करो, लिखते जाओ.
या ये मैं तो रैंडमली ही पूछूंगा, जरूरी नहीं कोई लाइन। ट्राई टू रिमेम्बर। इसका कार्बन भी काउंट होता है। कभी होगा तो सर सी डबल में क्या लिखें? नहीं, उसका कार्बन काउंट हो गया। पेंटेनॉइड कैसे दे? चलो बेटा स्टार्ट करो। अमन, याद करना है तुझे। चलो डन। लिस्ट किसके पास नहीं है इसको सुन। चलो now we are starting with practice. Okay, online students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now listen everyone. चलो अब बोलो चैतन्य।
पोएम बोलो। This is from build pen egg F of non-egg. ओके, आप बोलो प्रिंस। डेनियल, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मेरे सामने देख के बोलो। ओके, उसका सफिक्स क्या है? नहीं बेटा, जिसको पूछो उसको ही आंसर देना है और उसको सपोर्ट नहीं करना है। आपको आता है, आपको उत्साह में बोल देना नहीं है, बिकॉज आई विल कम टू यू अगेन। ओके, है ना? कभी कभी क्या होता है, हम उत्साह से हम बोल देते हैं, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। चलो बेटा, आप एस्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एस्टर, एस्टर RCOR नहीं, RCOOR है, RCOOR। और उसका सफिक्स क्या है? एस्टर सफिक्स क्या है? ओएट। क्या है सफिक्स? क्या है? ओएट। एस्टर में पीछे क्या लगता है? ओएट, है ना? चलो, आप हेलाइड्स रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? सफिक्स है कि प्रीफिक्स है वो? हाँ, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा उसका? रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं है, वो जो नई चीज आई है उसको आर के साथ लगाना है। तो नई चीज क्या आई है यहाँ पे? हैलाइड्स में नई चीज क्या होती है? हेलोजन एटम। तो RX क्या होता है? RX। चलो आप अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स RCOH या तो RCHO, उसका सफिक्स क्या है? AL, अल। मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, लाइकवाइज। क्या बेटा? अमाइंस, अमाइंस में सफिक्स क्या होगा? अमाइन इटसेल्फ। एंड अमाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अमाइन में किस चीज से बनता है अमाइन? अमोनिया से। अमोनिया में क्या होता है? 3 हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन निकालते जाओ, आर को जोड़ते जाओ बस। R3N होगा, या तो R2NH होगा, या तो RNH2 होगा। ये तीन में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, आप बेटा सॉन्ग बोलो। वेरी गुड, बोलो, कंटिन्यू। ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, नॉन एंड डेक। ओके, चलो आप बेटा कीटोन, कीटोन का रिप्रेजेंटेशन, कीटोन का रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं चलेगा। कीटोन का सफिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ONE, ऑन बोलते हैं उसको, करेक्ट। रिप्रेजेंटेशन RCOR। यहाँ पे चेक करो कि अगर यहाँ पे H है, यहाँ पे सिर्फ यही चीज पार्ट चेंज हो रहा है, H, फिर यहाँ पे R, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे OR, यहाँ पे NH2, यहाँ पे X, और यहाँ पे इतना वाला पार्ट। राइट साइड वाले पार्ट चेंज होते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला तो कॉमन ही है, RCO। ओके, CO कॉमन है, R तो होगा ही इस तरफ ये चेंज करते जाओगे, आपका कंपाउंड बनते जाएगा। ओके, ये डेली नेक्स्ट 10 डेज तक आपको लिखना है पूरा, डेली नेक्स्ट 10 डेज तक लिखना है पूरा, और मिथित वाला भी आपको 10 डेज तक लिखना है। ओके, इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्री फिल्ड फॉर्म्स है, यू कैन टेक दैट फॉर्म्स एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग। ओके, प्री फिल्ड फॉर्म है इनके। मुझे नहीं लगता है कि आप इसकी सीक्वेंस ये 16 एक साथ में याद रखो। नोबडी इज गोइंग टू आस्क व्हिच 16 ग्रुप्स आर देयर, बट इन 16 ग्रुप्स को अगर आपके सामने कोई भी सा एक आ गया तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। 110% यू शुड बी श्योर
कीटोन होता है तो RCOR ही होता है। ओके, वो श्योरिटी आपकी होनी चाहिए, करेक्ट। एंड देन यू हैव टू नो द सफिक्सेस। इसीलिए प्रीफिल्ड फॉर्म में क्या गिवन है कि ये गिवन है, बस आपको ये ऐड करना है और ये जगह खाली छोड़ देना। जब हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो इसमें भी फिलअप करेंगे, ओके, है ना। जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप के IUPAC आएंगे तो हमें ये करना है। ये क्लियर है? ओके, नाउ लिसन, लीव इट एज सच। ओके, तो नेक्स्ट सेशन का मैं अनाउंसमेंट करूँ उससे पहले इतना रेडी होना चाहिए जो भी हमने पढ़ा है। ओके, एंड स्मॉल काइंड ऑफ मटेरियल और काइंड ऑफ प्रैक्टिस बुकलेट विल बी गिवन टू यू, वो आपको कंप्लीट करके आना है, ऑल ऑफ यू को, ठीक है। चलो, इट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नाउ वी कैन एंड दिस सेशन बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू मे लीव।